Ladies and gentlemen, my name is Mansi Mishra, and on behalf of Odisha Byte and Odisha Sambad, I take the absolute pleasure and privilege to welcome all of you to this wonderful day. And when I say wonderful, it is indeed going to be a wonderful day ahead. So, ladies and gentlemen, आजिका समय रे आमे समस्ते सबु जिनस जल्दी चाहूँ. We want everything to be fast. We want everything to be quick. Be it our food, be it our discussions, everything has to be really fast. So Seithipai, I think it is safe to say, gone are the days when telephone was just used as a mode of communication to call our near and dear ones. But today, a smartphone, a mobile phone, is nothing less than a knowledge center. It's an instrument which has brought us closer globally, which has made sure that we are aware about what is happening probably in Ukraine while we are sitting here, which was thought to be quite a myth a couple of years ago. So in this dynamic and evolving environment, in the year of 2017, Odisha Byte started its journey by making sure that it reports unbiased news to its readers. I think that is the reason today we proudly say we are the leading digital news platform. आज्ञा भाषा भित्तिक राज्यर बासिंदा आमे ओडिया आमे बहुत गर्व रे कहू जे आमे ओडिया तो सेही कथा को ध्यान में रखिकी ओडिशा संवाद रो इनिशिएटिव आरंभ हैला 2018 रे. It's been 4 years since then. 4.5 कोटी ओडिया को निच्छक सत कथा पहुँचेबार उद्देश्य नहीं कि एटा आरंभ होइतिला. And we are truly thankful to our readers that they have blessed us, they have loved us. एवं ओडिशा संवाद मध्य वर्तमान समय रे is again a leading news digital platform. बहुत बहुत धन्यवाद सेतिपाई. Coming to today's occasion. 2 वर्ष 3 वर्ष परे पखापाखि बोध हुए गोटे हॉल रे एते बड़ बड़ लोक एकाठी हेइचंती देखा होचंती कथा होचंती. In the last 2 years, when we say that we had a very fast life, but now we live in a transformed era where I think all of us will agree that we have slowed down a bit. Health is wealth is no more a proverb that we used to colloquially talk to each other. Was a cliche dialogue previously. Kohutile samaste health is wealth. Sunuthule, alpa bahut bujhuthile. But nobody literally took it seriously. And if I may say, we got aware about it, we got to know about it when we were hit by the global pandemic of COVID-19. A lot of casualties, entire world was shook by it. এই 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, but there were so many things happening that we tried our level best to properly sensitize people about medical issues, about health issues, about the scenario related to COVID-19. Ajika Somayre, yes, we are here with our very first edition of SUSHRUTA, the Health Conclave. Naar hui apan jani parthube, SUSHRUTA. What can I say? The first Indian physician who turned out to be the world's first surgeon, who gave the magic of plastic surgery, who is very beautifully, covertedly, respectfully told as the father of Indian medicine. Since then, India has always been a leader when it comes to medical practices. Even when COVID-19 struck us, globally we as a country stood tall, fought against it, and yes, Odisha katha kon kahibi. Apan mane janichanti, not only me, the entire India, entire world is talking about how amazingly prepared we were to fight with the global pandemic. With all these things in mind, our readers particularly had so much of information related to COVID-19. A lot of them were untrue, WhatsApp forwarded messages. A few of them were actually true. But there is a lot of confusion around it, right? After the epidemic, I can't say after because the 4th wave is already hitting at the door. But we do have a breathing space. We do have a silver lining to, now that we have got an opportunity to actually meet, talk, understand the stakeholders of medical fraternity and the entire sector. Tanku aji ame bhetiba, tanko sohita kotha haba, tanko to bujiba. Ei prochestha amaro SUSHRUTA the Health Conclave madhyamare. Ke COVID-19
आम सहित रहिबो ना आमे ताकू केबे विदाय करि परिबा ता सहित there are lot many other things that now the world has focused on COVID-19 but ताकू छाड़ी कि भी medical fraternity medical industry रे बहुत किछि परिवर्तन घटिलानी we have upgraded ourselves, can I say that? Yes, we have carved a path ahead, we can say that. There are so many things that have happened जोटा आजी ए मंचरे ए conclave रे discuss होबो. With that we will start with the inaugural session of SUSHRUTA, the health conclave. And ladies and gentlemen, it gives me an absolute privilege because आजिरो ए health conclave रे आमको आमर मुख्य अतिथि भावे आम गहणरे उपस्थित अछंती our honorable minister family health and family welfare government of Odisha Shri Naba Kishore Das ji sir apanku बहुत बहुत स्वागत and once again so thank you so much for joining us today as the chief guest for the inaugural ceremony of SUSHRUTA, the health conclave. Shri Das has been at the forefront of the fight against COVID in the state, a fight that earned appreciation for Odisha from several quarters, including the WHO. Known to be a go-getter, the three-time MLA from Jharsuguda has also spearheaded several initiatives that have greatly benefited the health sector in the state. We are truly honored, sir, with your presence. Musanku swagat korikiri ajira ei mancho ko anurodh koribi, sir. Manchasin hebe, please bless us with your presence on the stage. As the guest of honor for today's occasion, we have Dr. Shubhrat Jena. What can I say about him? A very, very renowned, very, very well-known name in the medical fraternity across the country. An eminent orthopedic, Dr. Jena is the chairman, founder of Ashwini Group of Hospitals. He did his MBBS from SCB Medical College in 1977, MS Orthopedics from MKCG Medical College in 1982, and MCH Plastic Surgery from BHU in 1985. From a 50-bedded hospital with 3 departments, Ashwini Hospital has grown into a multi-speciality facility with 400 beds under his leadership, and the group now boasts of medical headquarters, trauma center, and nursing school and college. A very good morning, sir, and a very, very warm welcome. May I request you and welcome you onto the stage with your valuable presence. Ladies and gentlemen, as our guest of honor today, we have amongst us Dr. Shweta Padma Das, the Chief Executive Officer of Some Ultimate Medicare. Dr. Das is one of the most far-sighted and result-driven CEOs in the health sector. She entered the then nascent healthcare industry in Bhubaneswar with Ayush Hospitals and went on to work with Apollo Hospitals Bhubaneswar as DGM Operations, Quality and Research. She has set new benchmarks in delivering responsive and qualitative healthcare and helping Some Ultimate grow phenomenally and garner accolades, including the NABH accreditation. Madam, thank you for your valuable presence. May I welcome you onto the stage now. I would now welcome on stage, and yes indeed, the group editor of Orissa Bytes and Orissa Sambad, Mr. Sandeep Mishra. With over 2 decades of experience as a journalist, Shri Mishra is known for his insightful reports and analysis on subjects like politics, policies, sports, industry, extremism, and disaster management. Formerly editor-in-chief of Focus Orissa and News World Orissa, he gained popularity with his weekly talk show, Jawab Sawal. So thank you so much for joining us on stage. I would now welcome on to the stage our editor of Orissa Bytes, Madam Punya Pravaratha. She has been a journalist for around 20 years and worked in several newspapers and news portals, including the Times of India, Hindustan Times, the New Indian Express, the Asianins, and lot more. She writes on subjects like culture, sports, food, travel, lifestyle, and films. A very, very warm welcome to you, madam, onto the dais. And ladies and gentlemen, as we rightfully say, ame bhabubi konosi arambha ko subharam kariba pai prabhunka pakhare ame prarthana koru with the ceremonial lamp lighting. May I now request our honorable minister, Shri Naba Kishore Das ji, our chief guest of the inaugural session, and our esteemed dignitaries on the dais to kindly light the ceremonial lamp and inaugurate the session, please.
And ladies and gentlemen, if it's not too much of a task, I would request everybody also to kindly stand up and please participate in this very, very special ceremony, August ceremony, and pray for a great, great day ahead. वन्दे उत्कल जननी 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 चारुहासमयी चारुभासमयी जननी 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 वन्दे उत्कल जननी वन्दे उत्कल जननी पूतपयोधि विधौत शरीर तालतमाल सुशोभित तीरा शुभ्रतटिनिकुल शिखर समीरा जननी 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 वन्दे उत्कल जननी वन्दे उत्कल जननी घन घन वन भूमि राजित अङ्गे नीलभूधर माला साजे तरङ्गे कण कण मुखरित चारु विहङ्गे जननी 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 वन्दे उत्कल जननी वन्दे उत्कल जननी Bande Utkala Janani. Dhanyabad. I would now request our Honorable Minister and our esteemed dignitaries to kindly take their seats on the dais. And now, for the keynote address, I would humbly invite our group editor of Odisha Bytes and Odisha Sambad, Shri Sandeep Mishra. Thank you, Mansi. Namaskar. A very good morning to each one, everyone present today. Most respected, Honorable Minister for Health and Family Welfare, Shri Nabokishore Das ji. Revered Dr. Subrat Jana sir, Madam Dr. Sweta Padma Das, my colleague and friend, Madam Punya Pravarat, esteemed dignitaries, Professor Krupa Sindhu Panda sir, Professor Madhavananda Kar sir, Dr. Niroj Kumar Mishra sir, Madam Nilanjana Mukherjee madam. At the outset, I would like to briefly tell you all about our journey. Odisha Bytes, Odisha Sambad, kahinki arambha hoitila, kemiti arambha hoitila. Back in 2017, jota Guru Mansi mention kale, gote media re jo changes houchi in recent years because of technology, because of the massive change in dynamics of content consumption,
that is the time when we conceptualized Odisha Bytes. ମୁଁ ପୁଣ୍ୟପ୍ରଭା ଆମର ଅଲଗା କଲିଗ୍ସ ମାନେ ଆମେ ଭାବିଲୁ ସେତେବେଳେ ହୁଏତ it was time that after having served in the print, in television, across platforms in Odisha, outside, our team with a wealth of experience, we thought it was possibly the right time to enter into the digital world of news. Because ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ନ୍ୟୁଜପେପର ପଢ଼ୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ର କନଜମ୍ପସନ୍ ଡାଇନାମିକ୍ସ ଥିଲା ମେ ବି ୱାନ୍ସ ଇନ୍ 24 hours ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏବେ ସବୁ ଜିନିଷ ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ଚେଞ୍ଜିଂ ଭେରି ଫାଷ୍ଟ ଆମର ବ୍ରଡ଼କାଷ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ ଟେଲିଭିଜନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଟେଲିଭିଜନ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପରେ ଟେଲିଭିଜନର ଗୋଟେ ବହୁତ ଚାହିଦା ବଢ଼ିଛି ବହୁତ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହେଇଛି ମୁଁ ବି କିଛି ବର୍ଷ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲି ଦୁଇଟା ଟେଲିଭିଜନ ଚ୍ୟାନେଲର ଏଡିଟର ଇନ୍ ଚିଫ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମସ୍ ଆସିଲାଣି ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଆସିଲାଣି ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏତେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ର କନଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ ରହୁଛି ପିପଲ୍ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଅନ୍ ଦ ମୁଭ୍ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହେଉଛି ଯିଏ ଯାହା ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ୱି ଥଟ୍ ମେ ବି ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ ଟୁ take the risk and start our own startup, which we call Frontier Media. Frontier Media owns Odisha Bytes, Odisha Sambad, and we also have a website called Education Bytes, which specializes on employment and education domain. So it has been a very enriching and a very tough journey as a startup, building our team, setting up our office, getting our content right, and of course also managing within a lot of resource constraints. But it has been a very enriching journey and it's been a learning curve for all of us, and we are now proud to say that among all the independent digital news platforms in Odisha, we are the #1 platform today. We have a very strong presence in the English genre as well as in Odia, and also in the video segment we have growing very fast as a web channel, especially Odisha Sambad is growing very fast. Amara sabubele thila gote intention to go beyond news, to become a 360-degree media organization, because of which we've been organizing different activities, we've been doing different kinds of work, not to limit ourselves to news, because ଲୋକଙ୍କର ଆଉ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ୍ ହେଇକି ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏବେ ପିପଲ୍ ଆର୍ ମୋର୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସୋ ଅଲ୍ କାଇଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ वी आर ग्रेजुअली मेकिंग आवर फोरे and it is as part of that ଆମେ we had organized 2 earlier events, Corona Creativity and Lockdown Recipes, in the year 2020 ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ୍ ଆସିଲା ଆଉ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଲକଡାଉନ୍ ହେଲା ଶଟଡାଉନ୍ ହେଲା so we thought it was our responsibility to engage more with our audience, with our readers and with our viewers, and to engage with them in a more productive and in a more interactive manner. We organized those 2 online events, but amar sabubele priority thila ki ame gote on ground event karibu. So ebe jetebele sujog asila ame bhabilu, because Doctors Day achi on the 1st of July, we thought that was the right time to have a health conclave. But because Doctors Day is coinciding with Rath Yatra, so we thought we can have it on the eve of Rath Yatra. That is why we chose today, and hence we are all together. And ame health ku ago hi first amar on ground event kariu bili ame decide kalu, because health is, of course it always was, and today it more still is, because COVID-19 has reinforced our priorities, and amku health ku hi samastunku jagya ku padibo, and seti pai ame health conclave ru hi arambha karlu, and ame SUSHRUTA na dabaku decide kalu, because as Mansi has already said, he is the father of Indian medicine. He has inspired Indians for generations, for centuries, and I'm bhabilu with this name will inspire us. In fact, we will relieve the inspiration through this conclave, and hence we are
organizing this SUSHRUTA, the health conclave, and we want to engage more with all the stakeholders in the health industry, because ଯେତେବେଳେ COVID-19 ଆସିଲା ସେତେବେଳେ as journalists we were receiving lot of problems. It was a huge challenge covering this kind of a global pandemic. ଯେତେବେଳେ ଆମର ତା ଉପରେ ସେତିକି knowledge ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ everybody was groping in the dark, କ'ଣ କରାଯିବ, କ'ଣ ଲେଖାଯିବ, କ'ଣ news, କୋଉଟା ଠିକ୍ କୋଉଟା ଭୁଲ। ସେ ସମୟରେ ଆମର ସେତିକି ଯେଉଁମାନେ health sector stakeholders, doctors, health administrators, अन्य stakeholders का सहित आमर सेमती physical meeting है कि सेतिके हमको opportunity मिलू नथिला to learn more। आमे जा पाउथलु virtual medium रे पाउथलु, maximum over phone किछि हमें कथा है कि information पाउथलु, bits and pieces रे पाउथलु। So we thought कि this is the right time that we engage all stakeholders and we become more aware and more knowledgeable about what is going on in the health sector. Hence we have decided on two very relevant topics for discussion. Jota agugu habo gotala epidemics are here to stay the way ahead, especially focusing on the COVID-19 pandemic and especially with the fourth wave knocking at our doors. We thought that is of utmost importance, and we have also chosen another very important topic. Cancer is beatable, the Dosta Lima of hope, because health re gote miracle drug asichi bile be charcha hochi, gote asa sanchar heichi ki we to cancer is also curable, is also beatable. Hence we've chosen these two topics, and we really look forward to very insightful and very incisive discussion during the panel discussions. एतिकी कही कि मो आपण समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद देबी कि आपण माने समस्त नोटिस आपण माने समस्त आसीचंती आजी। We are really grateful to you and we look forward to a lovely day ahead. Thank you so much. In the era of over flood of information, thank you, sir, for taking the initiative to let us like common people know that exactly what is right, what is wrong, what is to be read and what is not to be read. And who better than the person whose brainchild is SUSHRUTA Health Conclave to talk about the conclave at the very beginning. So thank you very much, sir, for that keynote address. Now moving ahead, I would now humbly request the man who is responsible for many medical miracles in the state of Odisha, Dr. Subrat Jaina, sir, to address the gathering. Please, sir. गुड मॉर्निंग एवं सुप्रभात। अल्प समय 12टा बाजिबो तेणु मु सुप्रभात कहि आरंभ करुच्ची। माननीय ओडिशार स्वास्थ्य मंत्री महोदय श्रीयुक्त नवकिशोर दास, मिसेस श्वेतपद्मा दास, मिसेस पुण्यप्रभा रथ एवं संदीप बाबू, गोटे स्वास्थ्य कनक्लेव आपण मैंने करिसेंती सुश्रुत बोली ना देइसेंती, brings immense amount of joy to me personally. Sushruta was not only the most ancient Indian physician, but he was a great surgeon. एबे पर्यंत प्लास्टिक रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी रे सुश्रुतंग नाम न जानिले आपण जने सर्जन हेई पारिबे नाही। मोर गर्व एवं गौरव, मु तांकर पीठ बनारस रे प्लास्टिक सर्जरी एमसीएच कले। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस बनारस रे पसिबे। As you enter through the gate on the right hand side is that old building where there is a huge stone sculpture of सुश्रुता। ये होची आमर इतिहास, भारतर दान जे सी गंगा कूल रे गोटे अनुष्ठान आरंभ कले। खाली ता नुहे, जो आमर ग्रेट ट्रायोलॉजी ऑफ मेडिसिन अच्छी चरक संहिता, सुश्रुत संहिता एवं अष्टांग हृदय, ये भितरु मझिरे से लिखिथिले सुश्रुत संहिता।
निजे तैयारी करथिले इंस्ट्रूमेंट एवं सेतेबेलर गोटे बर्निंग प्रॉब्लम थिला चॉपिंग ऑफ द नोज वाज ए वेरी फेवरेट क्राइम रिलेटेड पनिशमेंट। ये महाशय सेतेबेले नाक तैयारी करिवारे लागी पड़ले जेतिक चॉप्ड ऑफ नोज थिला से गोटे एडे बड़ स्टिग्मा थिला ताको केमती मनुष्य मनरु लिभेबे सेथिपाई से फोरहेड स्किन नहीं नाक तैयारी करथिले। इट इज स्टिल द इंडियन फोरहेड फ्लैप, स्टिल द बेस्ट टिश्यू फॉर प्रोडक्शन ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ नोज। सो आम से देशर लोक 800 BC रु 600 BC भितर तांकर जीवन काल थिला। 200 वर्ष तो बंचु नथिबे केते बेले हेले किंतु जो 660 मसीह रे लेखा होता बोली सुश्रुत संहिता आम कहूँ सेटा होची द मोस्ट एंशिएंट लिटरेचर इन सर्जरी फॉर द एंटायर वर्ल्ड। तापर बहुत परे बाकी सब जिनस आसला यू सबू भाषा अनुवादित होती अरबी यूरोपियन ऑल यूरोपियन लैंग्वेजेस इंग्लिश ओडिया सबुतिर संस्कृत लिखी से सब जाक ट्रांसलेट हो जाइए। तांकर जो केतोटी अवदान आज पर्यंत लोक कंट्राडिक्ट करि पारि नाहंती हैला जो सुपरफिशियल इंटरमीडिएट एंड डीप बर्न्स ऑफ द स्किन 4 भागर बर्न को विभक्त करथिले आज पर्यंत रही। एथिक्स इन मेडिकल प्रैक्टिस ये कॉन्सेप्ट तांकर दान। एक्सपेरिमेंटल सर्जरी तरभुज को काटी वाटरमेलन को काटी से शिखौते पिला मानू केमिति ऑपरेशन करने को पड़े आज पर्यंत रही। एभली कतिर अवधि दान तांकर रही जो आम मैंने सर्वदा गर्वित। ये है इतिहास। वर्तमान को जीवा ओडिशार स्वास्थ्य पृष्ठ विषय में किछि किछि आपन कहया चाहूँगी। 1944 प्री इंडिपेंडेंस 3 वर्ष आगुरु एसयू मेडिकल स्कूल आम राज्य प्रथम मेडिकल अनुष्ठान आरंभ है। 1959 1959 मसीह द्वितीय आसला भीमसार बुर्लारे, तृतीय आसला 1962 एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज बरहमपुर। 62 पर गोटे महाशून्य आसीगला। 50 वर्ष पर्यंत आम आउ गोटे मेडिकल कॉलेज देखिलुनु जार परिणाम आज आम भोगुचु। 2012 रे एम्स प्रतिष्ठा है 1962 2012। सो दिस वाज ए पीरियड वेयर प्रोबेबली nobody could think that आम जदि डाक्तर तैयारी न करिबा स्वास्थ्य सेवा केमती दबा। मझे 3टी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आसिले। आज पाखापाखि 1700 सान बड़ चिकित्सा अनुष्ठान अच्छी सरकारी क्षेत्र में एवं गोटे मैचिंग नंबर ऑफ क्लिनिकल एस्टाब्लिशमेंट बा प्राइवेट मेडिकल एस्टाब्लिशमेंट अच्छी अराउंड 1700। द बेड स्ट्रेंथ इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स is close to 17,000 and a matching number of 18,000 are available in the private sector. मु या कहिबा को चाहूँची जे सरकारी स्वास्थ्य सेवा उपरे कौन सी देश संपूर्ण भाव निर्भर करि पारिबो नाही। तेणु प्राइवेट एस्टाब्लिशमेंट माननकु संपूर्ण सहयोग करिबो जोटा आम राज्य रे प्रतिपादित होईची। समान समान बेड तैयारी करी चलते आम जार फलस्वरूप आम कोविड को एभली मुकाबिला कलु जे आम देशर सबुठु 1 नंबर स्टेट होकर रहिलु। When the central all India death rate was 1.2%, ओडिशा डेथ रेट है 0.7%। सरकार दूरदर्शिता एवं वार फुटिंग रे जो काम कले युद्धकालीन भितर काम कले जो आम भावुल आमको एत गुड़ा बेड कौन दरकार किंतु 10,000 कोविड बेड तैयारी करागला ओवरनाइट जो आम आज
गर्व कहूँ जे ओडिशार स्वास्थ्य सेवा कौन सी राज्य तुलन में कम नुहे बरं सर्वाधिक। मोर जो बंधु मैंने बसी ओतप्रोत भाव में जड़ित स्वास्थ्य सेवा सहित से मैंने विश्वास करेंगे जे जदि सरकार एतिक प्रोत्साहन दे न थांते प्राइवेट मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन मानू आम ये पहुँची पारि न था। 1990 मसीह क्लिनिकल एस्टाब्लिशमेंट एक्ट तैयारी है ओडिशा रे, भारत रे है 2005 रे। दूरदर्शिता देखंतु केमिति गोटे ऑर्गेनाइज्ड वे रे आमे प्राइवेट सेक्टर को एथिरे इन्वॉल्व करवा, जो बोधे आपण आज सार को डाकचंती मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता हिसाब से मत डाकचंती प्राइवेट सेक्टर रू, shows that the future ahead is this public private partnership। एबे मंत्री महोदय कहते झारसुगुड़ा से जमती हेले एथर एस्टाब्लिश करेंगे हार्ट सेंटर एवं कैंसर सेंटर। तेणु आमर भविष्य हेउची एया जे आमे सरकारी कल सहित ताल दे प्राइवेट सेक्टर को आगे नबा, जोटा आज पर्यंत संभव हेइची एवं आगु को मध्य संभव हबो। गोटे जिनस आपन कही रखे, मेडिकल कॉलेज तो बहुत आम खोलला, एवं 7 नुआ मेडिकल कॉलेज खोलला, से बर्तमान टीचर मानक अभाव हो जाउछ। कहीं ये 50 वर्षर नीरवता पर जिते आम एटा को फेस कलु बिटर ट्रुथ, द वेयर आर द टीचर्स, वेयर आर द पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। से कि नेशनल बोर्ड ऑफ मेडिकल साइंसेस जाको एनबी बोली कहूँ आम, से मैंने खोली दीचन द्वार जे आपण मैंने प्राइवेट सेक्टर रे पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग आरंभ करंतु। आम समस्ते आरंभ कले। डीएनबी डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड इन मेडिकल साइंसेस, डॉक्टरेट नेशनल बोर्ड इन मेडिकल साइंसेस, डिप्लोमा इन मेडिकल साइंसेस, फेलोशिप इन मेडिकल ऑल ओपन। 100 बेड हॉस्पिटल रे ये सबू पोस्ट ग्रेजुएट करिकुलम आजिकल आरंभ हो पारुछ। कहीं सेठी गोटे दरकार अच्छे माने टीचर हेबे, फैकल्टी हेबे जो माने पढ़ेबे, नहेले आमे एमबीबीएस लेवल रही जावा। एनएमसी नेशनल मेडिकल कमिशन रे जो सब रही पैरामीटर से पोस्ट ग्रेजुएट सीट तैयारी करवा बहुत कष्ट सापेक्ष, किंतु प्राइवेट सेक्टर यदि सरकार आमको उपयुक्त प्रोत्साहन दियंती तेल आमे भी इक्विवेलेंट नंबर ऑफ पीजी सीट्स तैयारी करि परिबा, एटा मोर विश्वास। तेणु आजिर जो आमे देखिले अतीत वर्तमान आ भविष्य, ये गोटे जिनस आड़ को कहूँ जे सुश्रुत वाज ए प्राइवेट प्रैक्टिशनर। He did not wait for the state to help him to start his clinic or practice his surgery. Even today, the same thing hold good. एवं public private partnership ही आमर भविष्य। नमस्कार। Thank you very, very much, Dr. Jena. चिकित्सा क्षेत्र रे इतिहास रू वर्तमान जाए जहाँ जहाँ होती खूब सुंदर भाव में गोटे चित्र रूपायण सर कर आग को कौन हो पार वेरी ब्यूटिफुली स्पोकन सर। थैंक यू वेरी मच फॉर दोज इनसाइट्स। एंड नाउ मूविंग अहेड आई विल इनवाइट फॉर द नेक्स्ट एड्रेस द डायनामिक women entrepreneur who has changed the face of some ultimate Medicare in the state of Odisha, Dr. Shweta Padma Das. Madam, please. Thank you, Manasi. Honorable Minister of Health and Family Welfare, Shri Navkishore Das ji, distinguished guests on the dais, my respected seniors who is there in the hall today, the leading editors of Odisha Bytes, my media friends, ladies and gentlemen, namaskar and very good afternoon to all of you. Very strange times. A constant fear follows us everywhere we go. There is a thought, there is a question in the morning when we wake up, and that haunts us.
Masks, hand rubs, they are our companions everywhere. We have actually lost our independence. We are prisoners now. That's how I feel. And we always look at a door where we expect that it will open and it will give us a shining, bright day, which we expect, and where we'll have our life in front of us, how we want to live. I was just watching, many people have come with the mask, they're keeping it aside, and next moment, they're remembering to put it on. So with a immediate approach, they're picking it up from the table and putting it, so that they don't catch COVID. Now with this kind of a scenario, when we look at our future, it is like gazing a crystal ball, thinking what is going to happen. There are a lot of questions, there are a lot of apprehensions, there are a lot of fear, there is desperation, and sometimes we are lost into it. Most of the times we are lost into it, wherever we are. And there comes, what is health? And how do we define it? We know that it is not physical health alone. WHO has beautifully defined it as it is the state of complete physical, mental, and social well-being, and not just the absence of disease or infirmity. So, and if we look at this definition, then the goal, health for all, instead of that, we should see health for some, SOME, some. Because my organization's name is also some. And now, as Dr. Subrat said, a lot of things, we'll have our own lessons today learned from here, because many voices will be heard. Many voices will be, put forth with ideas. And I'm sure this conclave has been designed so that it will be capturing a lot of ideas back home. But then one thing I would say, we all have to think that, are we really aiming at health for all? That's a question, that's the first question we should ask ourselves. If that is the thing, how are we going to do it? I had a simple way when I thought of, going into it, going into the concept. And the way was, start from yourself. So what are the scopes of or sphere that I can influence? My sphere was some ultimate Medicare. So what did we do? It was a hospital. We opened, or we did our inauguration in the month of February, and we got a punch in the March, it's COVID-19. So we were again thinking that, kya hua yaar, what happened? And whether we'll be able to open the hospital, whether we'll be able to get the patients, whether we'll be able to serve the patients, whether we'll be able to play our roles. There was big questions. But as again Dr. Subrat said, we did. We all did. And as a new hospital, I also was not shut up. I was also standing very firm, and with the team, we did wonders. That is a part of it. What government has come up, the ideas and policies, it's people-oriented, and we try to put forth. Today, if I was just checking with my hospital, we have 50% and more BSKY patients in the hospital. Health for all. And if we take the medical college, my sister concern, maybe they are serving the highest numbers of BSKY in the state. So this is how we are influencing our sphere, what we can do, because we need to get engaged. Once we get engaged, we'll be able to realize it. That's the mantra. So what I would be requesting, that this is a beautiful forum where again we are reminded that we can put some kind of a difference.
and get the things right, or set the things right and make things better. So it is always good to keep it open and understand what best we can do in the sphere we influence. With that, I would say that health is the foundation of an individual and families to flourish. It is the community can prosper and the nations can thrive. And so I would say that we should all actually aim at how can we contribute to that concept, health for all. I wish you all a very good day and health always. Thank you. Thank you very much, madam. How beautifully you said that macro level re lokon ko bujiba dekhiba purboru micro level re dekhiba is also, I think it's very, very important. Thank you so much for bringing out that point. And now, moving ahead, it's now time tanko to suniba the man who, under the able leadership and guidance of our Honorable Chief Minister Shri Naveen Patnaik, led in the forefront of COVID-19 battle that our state was fighting. Yes, our Honorable Minister Shri Nabakishore Das sir ko bartaman mo anurudh karbi to address us, please. Gori jordar tali deki sir ko ame welcome kariba. काली रथयात्रा तेणु प्रभु जगन्नाथ सारा विश्व लोक आसवे मु धन्यवाद देवी मत एठी डाकिचंती हेल्थ कनक्लेव करिकरी बीइंग ए हेल्थ मिनिस्टर एवं एठी हमर अछंती डायस रे अश्विनी ग्रुप चेयरमैन सुब्रत बाबू, डॉक्टर सुब्रत जेना, श्वेता पद्मा दास, एडिटर बाइट रो पुण्य प्रभा रथ एवं तांको सहित अछंती एवं अन्य डॉक्टर माधवानंदकर हुम आई नो पर्सनाली, जयंत बाबू, अमरी हॉस्पिटल अन्य समस्त अछंती। मु आपन को गोटे कथा कहि देबा पई चाहे, आई मस्ट बी थैंकफुल टू माय चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ऑनरेबल। यू विल नॉट बिलीव जिते कोविड आरंभ है आमर विधानसभा चली था, मोर ठीक मन अच्छी, मत सीएम डकई पठेले, इमिडिएटली अनाउंस कले विधानसभा हैज टू बी स्टॉप। सबू बहुत विभिन्न दलर लोक प्रश्न करते जमती कौन है जे विधानसभा कहीं बंद हो। देखो द फार साइड ऑफ द लीडर ऑफ द स्टेट आपण विश्वास करेंगे सांगे सांग युद्धकालीन भित्तिरे सोम हॉस्पिटल अन्य प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कटक सुब्रत बाबू जहाँ कहते इमिडिएटली सबू हॉस्पिटल गुड़ाक बेड तैयारी करागला। नॉट ओनली दैट मु बहुत जगह को जाइछि, बट आई मस्ट बी थैंकफुल ओडिशार जेते डॉक्टर अछंती, वेदर इट इज प्राइवेट और गवर्नमेंट, इट डजंट मैटर, आई मस्ट सैल्यूट टू देम। डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, आमर गाँ गंडारे जो माने काम करथिले एएनएम टू नेकरी, हेल्थ वर्कर टू नेकरी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टू नेकरी, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पर्यंत अक्लांत परिश्रम परे कोविड ओडिशा रे नियंत्रण करा जाई पारिछि। एवं आरटीपीसीआर टेस्ट विल यू नॉट बिलीव इन एवरी डिस्ट्रिक्ट वी हैव ए सेटअप। केतले माननीय मुख्यमंत्री जाउथिले, केतले मते पठाउथिले बहुत विभिन्न जगह को जाई, एवं थैंक्स प्राइवेट एवं गवर्नमेंट ऑल्सो। एवं मु आपको तो कहबी जो तीनटा मेडिकल कॉलेज रु जो डॉक्टर माने बाहरी थिले दे आर यूनिक। कटक एससीबी आज भी सारा वर्ल्ड रे ना करछि, बरमपुर मेडिकल कॉलेज रु बहुत डॉक्टर बाहरी चंती, समाने भी बहुत ना करचंती, भीमसार रु बाहरी चंती, समाने भी बहुत ना करचंती, अतीत रे भी ओडिया डॉक्टर माने ना करचंती, आज भी ना करचंती। एवं मु दुई तीनटा कथा कहबी जहाँ सुब्रत बाबू कहते जे प्राइवेट को मध्य आम एनकरेज करिया कथा, मु संपूर्ण एकमत।
किंतु ता सागर मोर आउ गोटे रिक्वेस्ट है सब प्राइवेट एंटरप्रेन्योर मानक आपण मैंने खाली कटक भुवनेश्वर सेटअप न करंतु किछि किछि इंटेरियर एरिया जोठारे कि हेल्थ सिस्टम पहुँची पारु नाही जदि आपण मैंने सेथिरे मध्य गोटे सेटअप करेंगे ताले जहाँ आज ओडिशा को देखुंत यार 10 टाइम्स बढ़ी इट इज माय सजेशन एवं आई डू नॉट बिलीव जे कटक भुवनेश्वर जदि सुविधा अच्छी ताले एंटायर थिंग्स इज ऑल राइट आई बिलीव एंड थैंक्स टू माय चीफ मिनिस्टर एंड माय गवर्नमेंट कहीं केवे स्वप्न रे भावु नथिले जे बलांगीर रे गोटे मेडिकल कॉलेज हे आज मेडिकल कॉलेज है बलांगीर इंसेंटिव व्हाट नॉट वी हैव डन मु गजपति जिल्ला रे जाइथिली देयर आर मेनी डॉक्टर्स आई बिकेम एस्टोनिश नॉर्मली डॉक्टर डू नॉट गो देयर मुझे शुणिली जे पीजी जे सेठी रहिबो से मार्क पाइबो इंसेंटिव मध्य पाइबो आमे जे केबीके जिल्ला रे रहउछि ताको आमे इंसेंटिव दोछु देखु आजिकल 21 सेंचुरी हेलानी यू हैव टू मोटिवेट एंड डॉक्टर आर द सेकेंड गॉड तांकर दरकार टिके प्रेस्टीज टिके तांको एनकरेज कले दे विल वर्क एवं सेमाने ही जीवन बंचे पारिबे टेक्निकली आमे बंचे पारिबानी तेणु माय गवर्नमेंट माय डिपार्टमेंट आमे इंसेंटिव देलु एबे देखंतु डॉक्टर मान को आमे प्लेन रे पठाउछु विभिन्न आड़े चिकित्सा करबा पई अच्छा कई भाभी फुलवाणी रे गोटे मेडिकल कॉलेज हे एवं आज गोटे पर गोटे तालचेर मेडिकल कॉलेज हे सुंदरगढ़ मेडिकल कॉलेज हे मु गुरु रविशंकर रिक्वेस्ट कर झारसुगुड़ा आई एम ट्राइंग फॉर ए मेडिकल कॉलेज तो स्वास्थ्य सेवा आज ओडिशा रे भुवनेश्वर कटक रे सीमित ही रही ना या रही कोरापुट बलांगीर सेपटे ये पर्यंत नंबर 1 नंबर 2 है ये गोटे कॉइन रो 2 पार्ट देखंतु जदि स्वास्थ्य सेवा को आमको नेबा पड़ो ताले खाली भल चिकित्सा हेले हेनी माय गवर्नमेंट देखुची जे मोर 4.5 कोटी लोक ठू 80% जो माने गरीब लोक से माने से चिकित्सा केमती अवेल करि परिवे समस्ते प्राइवेट पे जाई परिवेनी तेणु गवर्नमेंट रो हमको पीएससी रु देकी सीएससी पर्यंत आमे वी आर प्लानिंग टू सेट अप एवं विल बी एस्टोनिश आमे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल रे एमआरआई सीटी स्कैन ये सब मध्य दउछु आज एम्स को आप जानतु हजार हजार लोक लाइन रे आप देखिए बिकॉज दोज हु कैन अफोर्ड दे कैन गो टू एम्स दे कैन गो टू एससीबी एवं दिस इंस्टीट्यूशन आर मु कहिबी वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन द स्टेट मु एससीबी मेडिकल कॉलेज डॉक्टर मन कथा जदि कहिबी कैपिटल हॉस्पिटल कथा कहिबी कैपिटल हॉस्पिटल आप देखंतु केते भल भल डॉक्टर अछंती तेणु एबे स्वास्थ्य सेवा बहुत आग को जाइछि तेणु देखंतु माय गवर्नमेंट माय डिपार्टमेंट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना आपण देखंतु आमे जहाँ चाहिले गोटे गरीब लोक प्राइवेट हॉस्पिटल को जाइकरी एफोर्ड करि परिबो दिस इज नॉट ए यूनिक स्टेप बाय माय गवर्नमेंट डेफिनेटली ऑफ कोर्स नंबर 1 आई हैव टू सी whether my people can afford or not से माने अवेल करि परछन्ते being elected by people in a democracy that is our responsibility जे स्वास्थ्य सेवा किबळी भावरे फुलवाणी को जाई परिवो झारसुगुड़ा को जाई परिवो कटक को आसी परिवो सारा ओडिसा रे किबळी हे परिवो दिस इज आवर प्लान अकॉर्डिंग टू आवर प्लान मु एबे कहूतली सुब्रतम को जे फर्स्ट टाइम इन ओडिसा पीपी मोड रे जहाँ कहते प्राइवेट एंड पब्लिक पार्टनरशिप रे झारसुगुड़ा रे गोटे हार्ट हॉस्पिटल आमे तैयारी करिछु जहाँ यही डिसेम्बर रे स्टार्ट हो फर्स्ट टाइम इन द ओडिशा एंड फंडेड बाय महानदी कोलफील्ड सेकेंड वी आर गोइंग टू डू इट इन कैंसर हॉस्पिटल इन द झारसुगुड़ा ऑल्सो बरगढ़ रे गोटे कैंसर हॉस्पिटल हो तेणु स्वास्थ्य सेवा ओडिशा रे जहाँ आमर प्लान जहाँ
आमर मुख्यमंत्री चिंताधारा एवं आपण मान सहयोग रे एवं आपण देखिए जिते कोविड रे सारा पृथ्वी हाहाकार होता ऑक्सीजन पाऊ नथिले लोक रामडिसिवर पाऊ नथिले मु तो हेल्थ मिनिस्टर हिसाब से सब औषध ना भी जानी देलेनी कहीं माने कोटा कौन होची कोटा कॉकटेल कोटा कौन माने ए डॉक्टर मान फोन करी करी मोर भी एक्सपीरियंस हो गलानी कोरोना रे कौन एक्चुअली एवं आई एम प्राउड ऑफ दैट आई एम ए हेल्थ मिनिस्टर इन कोरोना टाइम बहुत लोग भावते हेल्थ मिनिस्टर टा गोटे माने हेल्थ डिपार्टमेंट टा गोटे बहुत प्रॉब्लमेटिक डिपार्टमेंट बट आई एम थैंकफुल टू माय चीफ मिनिस्टर सेकंड टाइम ऑल्सो आई बिकेम द सेम डिपार्टमेंट बिकॉज आपण ये गोटे कथा अच्छी आप जिते लोक साहाय्य करेंगे अन्य कौ डिपार्टमेंट करें गोटे लोकर सबुठ खराब समय कौन वेदर इज ए मिनिस्टर और चीफ जस्टिस और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तार जदि देहटा खराब है से ही हैज टू गो टू ए फिजिशियन दैट इज द मु भावुँ वीक टाइम सबुठ तार मनोबल भांगी जाइए मोर कौन हम कौन नहीं तेणु यू हैव टू गो टू ए फिजिशियन तो आमको डॉक्टर मानक सब बेले एकदम ऊपर रखा पड़ो किभली डॉक्टर माने इंटेरियर को जी इनसेंटिव देवा पड़ो तांकर क्वार्टर बनवा पड़ो तांकर समस्त सुविधा करने पड़ो एबे धीरे धीरे आम वी आर प्लानिंग ऑल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपन देखिए 5 वर्ष पर ओडिशा रे बलका डॉक्टर हिज जहाँ सुब्रत बाबू कहते इट इज ए फैक्ट 3टा मेडिकल कॉलेज पर 50 वर्ष ये है एबे किंतु जहाँ प्लान एवं सेतबेले भी मुझे आपको कहवाक चाहूँगी हेल्थ को किए देखुला बिफोर कोरोना 5 वर्ष 10 वर्ष समस्ते गुरुत्व देले एवं स्वास्थ्य भित्तिभूमि रे मु भावुची माई गवर्नमेंट ओडिशा सरकार एवं आवर चीफ मिनिस्टर आप विल यू बिलीव वी आर स्पेंडिंग पर डे 3 crore रुपीस माने मंथली आम 100 crore खर्च करुँ विजु स्वास्थ्य रे बट आप विश्वास करेंगे चीफ मिनिस्टर इज आस्किंग मी व्हाई डोंट इट मोर और खर्च करो लोगों को दो फिर मैं कि मो कहया कथा ये गोटे पार्ट आउ गोटे पार्ट मुझे आपण मानू कहवाई चाहे मु प्रभु जगन्नाथ पाखे प्रार्थना करुँच लोक रोग न हो टी प्रिकसन नवा आम टी एक्सरसाइज करवा टी जोग करवा खाଇବା कंट्रोल करवा खाली डॉक्टर पाखे गले तो हम नहीं आमको प्रिकसन नवा पड़ो अवेयरनेस प्रोग्राम रहा पड़ो बिफोर जमती जापान रे प्रत्येक से माने सबू टेस्ट कराती तेणु से पार्ट रे मध्य आमको टिके देवा पड़ो आई एम थिंकिंग ऑन दैट वे थर्ड पार्ट है रिसर्च आमर खाली रिसर्च हवा मध्य दरकार एवं हेल्थ डिपार्टमेंट रू आयुर्वेदिक ठू नहीं आम किसी रिसर्च करवा कथा एवं एससीबी मेडिकल कॉलेज रे मध्य आम इनिशियली वी आर स्टार्टिंग जो पीजी स्ट्रीट कथा कहले से कथा मध्य आम ये करुँ एवं जी भी प्राइवेट वाला है तो मुझे 3टा केते देछि परमिशन गोटे सुब्रत बाबू कर पेनाल कोड रो कौन माने मोर मन अच्छी जे आसला मु प्रेजेंटेशन तुम जहाँ कर फॉर पीपल वी आर रेडी टू हेल्प एनी वेदर इट इज प्राइवेट और गवर्नमेंट इट डजंट मैटर डॉक्टर आर डॉक्टर ट्रीटमेंट इज ट्रीटमेंट अल्टीमेटली पीपल माय स्टेट विल बी बेनिफिटेड तेणु से जा हो आज मु धन्यवाद देवी जे जो आमर ओडिशा बाइट जे जा गोटे स्वास्थ्य ही संपद एवं स्वास्थ्य बिना किसी ठीक नहीं जदि आप स्वास्थ्य नहीं तो आप मूड ठीक हेनी हाई बीपी हेल्ले आप कम करेंगे कौटी तेणु हैव टू लुक आफ्टर इट एवं बीइंग ए हेल्थ मिनिस्टर आई कैन एश्योर any problem, whether it is a private or if anybody will come to our department, definitely will encourage एवं जदि किए इंटेरियर रे करिवो आहुरी लैंड टू नेकरी मध्य समस्त व्यवस्था करिवार तार मध्य आमे करिवु एवं पुणी थरे कोरोना टाइम रे जो माने भी दिन राति आपण देखंतु से जो पिंधी की डॉक्टर माने 8 घंटा 10 घंटा रहउतले again I am thankful to all doctors
जे केते मेहनत करके से लोक को बंचैछंती एवं आज ओडिशार ना जदि रोची माय गवर्नमेंट ना रोची द क्रेडिट मस्ट गो टू all medical staff, doctors, police, administration and people. Thank you. Thank you very much, sir, for that very powerful address indeed. आमर विश्वास जोटा आम देखीचु आगुरी भी कि ओडिशार स्वास्थ्य क्षेत्र आपण नेतृत्व में बहुत आगक बढ़ो कारण बहुत छोट छोट जिनस को भी आप ध्यान दौरान बीट लाइक सेल्फ अवेयरनेस ऑफ पेशेंट्स हो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो जो जिनस गुड़ा को बोध हुए ऑन मैक्रो लेवल लोक मैंने इग्नोर कर दिखती बट सर विजन रे से जिनस भी इनक्लूडेड अच्छी एंड ही इज वर्किंग टुवर्ड्स मेकिंग ओडिशा अ हेल्दियर स्टेट. थैंक यू वेरी मच सर फॉर दैट एड्रेस. एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, it's time to thank and honor our guests, our dignitaries, our chief guest, our guest of honor जे समय बाहर करके आम गणना उपस्थित होती इनसाइट्स आम सहित शेयर कर आमे ओडिशा बाइट एवं ओडिशा संवाद तरफ आज सभा फेलिसिटेट करवा. मु अनुरोध करी आम ग्रुप एडिटर श्री संदीप मिश्र को एवं यस एडिटर ऑफ ओडिशा बाइट्स मैडम पुण्यप्रभा रथ को टू काइंडली प्लीज कम फॉरवर्ड एंड फेलिसिटेट फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक एंड फेलिसिटेट आवर ऑनरेबल मिनिस्टर सर श्री नबकिशोर दास. सो दर्शक बंधु यही सम्मानटी ये भल पाइबा जे खाली आम तरफ नुह प्रत्येक ओडिया तरफ सर माननीय मंत्री महोदय सर विजन सर कार्य जहाँ आम राज्य रही राज्यवासी रही अतुलनीय. I would now thank you very much, sir. Now I would request Sandeep sir and Punya madam to kindly felicitate our guest of honor, Dr. SUSHRUTA Jaina ji. वर्तमान अनुरोध करी संदीप सर और पुण्या मैडम को सम्मानित करेंगे आम गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर श्वेतपद्मा दास महोदय को. Thank you very much. And now to propose the vote of thanks, may I invite our editor of Odisha Bytes, Ms. Punya Ratha. Good afternoon, everyone. As they say, no duty is more urgent than returning thanks. Thank you, Minister Sir, for not only sparing your valuable time to grace the event, but also giving an insight into how Odisha prepared itself for the battle against COVID and the steps that are being taken to strengthen the health sector in the state. Dr. Jaina, Dr. Das, thank you for giving hope to people amid the COVID gloom. I, on behalf of my team members and the organizers, would like to pass my warm thanks to the audience for their significant presence. Thank you all. Thank you very much to our esteemed guests and esteemed dignitaries. So with that, I think I can officially say SUSHRUTA, the Health Conclave, is officially inaugurated now. And now, ladies and gentlemen, Jimiti already, I think, Shwetapadma madam kahitile that now health is only not about physical health but also mental health, and that has become one of the prime focus areas in the pandemic time. Pandemic bode hi ame jani parilu je khali sharir re swastha rahiba is not that is important, but also mentally सुस्थ रहिबा मध्य बहुत ही important. एवं सेई कथा को आपनका पर्यंत गोटे भिन्न धरण रे कहानी रूप रे पहुंचेबा पई आई विल इनवाइट मैडम प्राची तारा
the journalist turned anchor. She is a well-known professional storyteller based in Odisha. She recently started her podcast show on Spotify by the name of Prachi Katha. An AIR artist and Doordarshan anchor, her articles and poems have also been published in leading Oriya magazines. So ladies and gentlemen, I present you Madam Prachi Tara. नमस्कार. भोर भाई अब पंछी बोले, डाल डाल पर सरगम घोले. भोरा भाई अब पंछी बोले. बहुत दिन तले जड़े राजा थिले. राजांकर गोटे झील बहुत सुंदर, जेमती गोटे चाउल रे गढ़ा. खाली रूपरे नुहे, गुण रे भी. संगीत, नृत्य, विद्या, बुद्धि सबुथिरे पारंगम राजकुमारी. और राजकुमारी रूप गुणर चर्चा खाली से ही राज्य रे नुहे, राज्य बाहर आखपाखर सब राज्य रे प्रसारित हो सारी थाए. और राजकुमारी जेतेबेले बड़ हेले आपण माने जानिछंती, आखपाखर राजकुमार माने समस्ते प्रस्ताव पठेले तांको बाहाबा पाई. थरे राजा आसी कहले राजकुमारी को, झियो एबे तोर विवाह बयस हो गलानी. तो माँ थिले तो कहीं कौ दिन मत से कथा कही था, किंतु जेहेतु तू पिला बेलू मातृछुंड होइछु, एबे मोर दायित्व होची तते उपयुक्त पात्र रे विवाह करबा. ना 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 बाबा, मु बाहाबा को जमा चाहेनी. मु तुमको आगुर भी कहिची मु एमती गीत नाच पाठ पढ़ा आ मो बाबा को सबुठ बेसी भल पाए. ता व्यतीत आ कोनोसी पुरुषों को मु विश्वास करेनी. माने आपण माने जेते पुरुष एठी बसछंती निश्चय मने मने भाबुथिबे राजकुमारी पुरुष जाति को घृणा करे. हाँ सेया, राजकुमारी पुरुष मानको सब पुरुष मानको घृणा कले ना. पुरुष माने विश्वास योग्य जमा भी नुहंती. तेबे राजा यार कारण बुझी पलेनी. काहेकि झील मन रे एपरी गोटे निष्पत्ति आसुची, एमिति गोटे निर्धार्य से हेई सारची जे से विवाह करिवो नहीं. आ सब पुरुष खराब, आ कोनोसी पुरुष को से विवाह करि परिबो नहीं, विश्वास भी करि परिबो नहीं. तेबे कारण कोन? पाख राज्य रे जड़े राजकुमार थांती, से जेतेबेले इच्छा करथिले राजकुमारी को विवाह करिया पे जेतेबेले एई खबरटी पाइले, विवाह करिया को मना करछुंती. आ कारण होचे से पुरुष मान को घृणा करंती, भल पांतिनी. ताहले मु जाए छद्म बेसरे राज्य रे प्रवेश करे आ कारणटी जानिबा को चेष्टा करे. तेबे राजकुमारी जनक निजर बेस बदलई से राज्य रे आसिले. राज्य रे पसिला परे से राज्य रो पसिला परे गोटे कुड़िया घर देखी से दिन आश्रय नेले. से टिके टक टक कले, किए अछंती के घरे? के रे पुओ? माउसी आज राति को ये टिके आश्रय नहीं पारि, सकाळ हेले पळेबी. मुई राज्य रे नुआ, काहाकू चिन्हिनी जानिनी. आस आस, एई देख मु केते फूल गुंथुची. प्रतिदिन फूल नहीं मु राजकुमारी पाखकू नर को जाऊची. हाँ तारे तो यही मौसी जनक राजकुमारी को भल भाव जानी थे. ठीक कथा.
राजकुमार को मन कथा तो मन अच्छी से पचारे अच्छा मौसी राजकुमारी कौन बह करने को मना करुँच हाँ आ कौन कर पिलाटी बेलू ताकू जो धाई माटी पाला से गोटे कहानी ताकू कही चलला कहानी कहानी गोटे पिलाटी बेलू कहली से बाहा को मना कर हाँ आउ नुहे तो कौन एमती कहानी कौन सब बेले कह जाए मौसी से कहानीटा कौन टे कह मत हौ पचारुछु जदि पुओ शुणे कहानी हूँ राजकुमारी जिते बहुत छोट थे माँ जेहेतु मरी जाते राजा द्वितीय बह भी करन से कहले जो कहानी कहते प्रतिथर जे बहुत दिन तले गोटे गछरे दुई जन चढ़े दुईटी चढ़े दुईटी कुन्नी कुन्नी छुआ सहित खुशी रोते छुआ दुईटी जन्म होता उड़ीवा शिखी न था थरे कौन है जंगल रे निया लगिला सबू पशु जेते बाघ जे थांती पशु सबू धाई धाई आवाज करे चित्कार करे भागीबा को लागिले दौड़िया को लागिले से समय माँ चढ़ईटी कहला चलो चलो आमे मो छुआ को लेकिन पलैबा आउ गोटे जंगल को पलैबा आउ को गछ देखी पलैबा ये तो निया लगी जीव बाप चढ़ईटी कहला रोहुन मु अच्छी ना निया आगे लागू लगिले मु बंचेबिनी मो परिवार दायित्व मोर मु समस्त को बंचेबी पुणी थे देखला माँ चढ़े और संभाली पारानी समस्ते उड़े चलो चलो ये तो पलैबा समस्ते पलि गले समस्ते कुरुड़ छाड़देले समस्ते जंगल छाड़देले ओहो कहीं व्यस्त हो रह निया लगिले लगे मु तो अच्छी ना बचाई हाँ देख आम छुआ दीटा उड़ा शिखी ना तो धरिकी पुणी आम उड़ा हो तो व्यस्त होना शेष जिते बड़े से गछरे हुत 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 होके निया धरला माँ चढ़े आ छुआ पोड़ी की मरुले से माँ चढ़े देखला बाप चढ़े निजको बंची उड़ी पहला आई कहानीटी राजकुमारी को जे पालुले जो धाई माँ जो दासी से राजकुमारी पिलाटी बेलू यही कहानीटी प्रतिदिन कहवाक लगिले जहाँफल राजकुमारी मन कले हाँ मु हूँ पूर्व जन्मर से माँ चढ़ई आउ मो स्वामी मते और मो छुआ को मरिया छाड़ी उड़ी पड़े निज जीवन बंची से ये जन्म कौन सी पुरुष को विश्वास करने को रेडी नुहति ये कहानी राजकुमारी कहीं बह को राजी नुहति तेबे राजकुमार सारा राति भाविले कौन करा दरकार ये मानसिक अवस्था को बदलवाई मनर जो गोटे बीमारी अच्छी जो रोग अच्छी तार औषध कौन हो पारे ता परदिन से नगर को प्रवेश कले आउ राजा को कहले महाराज मु जड़े स्टोरी टेलर जमती मु काम चारिआडे बुलिबा विभिन्न जगार स्टोरी ग्रहण करवा बुझीबा आउ ताकू लोक मान को कहबा किंतु महाराज मोर गोटे कंडीशन ए दरबार रे गोटे भी स्त्री लोक रहिबेनी ना गोटे भी स्त्री लोक रहिबेनी ता हेले मु स्टोरी कहबी महाराज कहले काहे एमती कौन से समय राजकुमारी पर्दा पछ आड़े ठिया होई शुणुथांती पर्दा आड़े कहले ये किए मु तो पुरुष मान को मना करे ये किए से लोक जी कहे स्त्री लोक कथा शुणबनी स्त्री लोक आगे किसी कहबनी राजकुमार कहले महाराज आ पछरे गोटे कहानी अच्छी कहानी या जे मोर जिते जगह बुली जड़े ऋषि पाखे थे पहुँचली बहुत सेवा कली तापर सी मत मो पूर्वजन्म कथा कहले आ से कहले पूर्वजन्म गोटे चढ़ई थी मो स्त्री आ छुआ मान सहित गछ कोरड़े भलरे रोहुली आउ जिते बड़े जंगल रे निया लगिला मो स्त्री
मते आ मो छुआ को मरिबा पई छाड़ी दे निजे उड़ी पळैथिला सेथिपाई मु जेतेबेले जानिली मु सही पुरुष चढ़ई जाकू मो स्त्री धोखा देइथिला मु ए समाजर समस्त स्त्री लोक मानकु घृणा करे विवाह तो पर कथा मु चाहेनी मो सम्मुखरे केही भी स्त्री लोक बसी रहंतु से समय राजकुमारी पर्दा आड़े बाहरी आसले और कहले ना तुम्हें तुम्हें मत धोखा देइथिलो राजकुमार कहले ना तुम्हें तुम्हें उड़ी जाइथिलो मु आ छुआ माने पोड़ी के मरथिलु ना तुम्हें दुहे परस्पर को आक्षेप करके लगिले तुम्हें स्वार्थपर से समय राजा सिंहासन ओह्लई आसिले आउ कहले रुह रुह शांत हुओ मने हुए पूर्व जन्म रे तम दुई जनकर बुझामणारे किछि भूल भटका रही जाइछि ए जन्म रे तुमे दि जण ताकु सुधारी पारिबो गोटे काम करो दी जण विवाह करो परस्पर कथा बुझ आउ ए जन्म रे देख तमे माने भलरे रही पारुछ कि ठीक से समय राजकुमारी देखिया को चेष्टा कले हाँ अति सुंदर चेहरा राजकुमार आस आस राजकुमार एथर मु तुमको विवाह करने को प्रस्तुत हाँ तापरे राजकुमार राजकुमारी विवाह कले आउ अनेक 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 वर्ष खुशी रे रहिले थैंक यू सो मच आज मेंटल हेल्थ कॉन्क्लेव रे फर्स्ट एवर मेंटल हेल्थ कॉन्क्लेव रे ए स्टोरीटी मुझे चूज कली कहवाई कहीं जिते हेल्थ कॉन्क्लेव कथा आम चिंता करुचु डिस्कस करुचु से मेंटल हेल्थ ऑल्सो कम्स फर्स्ट कहीं आपण मैंने समस्ते डिग्निटरी डॉक्टर्स अच्छा डिग्निटरीज अच्छा यू ऑल ऑल्सो टेल एज अ पेशेंट कि मन को सुस्थ रखु मन को खुशी रखु से बोधे पिला माने कौन सी बेमारी जल्दी रिकवर करती मैडम थैंक यू सो मच एंड ओडिशा बाइट्स एंड ओडिशा संवाद इनिशिएटिव को अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज आई हैव ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ ओडिशा बाइट्स एंड ओडिशा संवाद एंड अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस ग्रेट इनिशिएटिव थैंक यू वंस अगेन Thank you, Prachitara madam. इतने जल्दी आमे अपन को जीवा को दबुनी because you're such a gifted person actually. Because storytelling is आज का समय रे one of the most powerful tools when you want to actually give a message around and अपन इतने खूब सुंदर भावरे so many voices, so many expressions together. ओडिशा बाइट तरफ रो ओडिशा संवाद तरफ रो संदीप सर को अनुरोध करिवे अपन को सम्मानित करिवे धन्यवाद जणेबे for actually creating huge awareness about mental health. A lot of talks, lot of discussion going around about it. It's high time that we take mental health as seriously as we take our physical health. Thank you so much, Prachitara madam. Thank you so much. Thank you very much, madam. Thank you, Sandeep sir. Thank you, Pune madam. And Bartaman, जेमिति कि संदीप सर आगे कही थिले जे आज रो ए सुश्रुता द हेल्थ कॉन्क्लेव रो फर्स्ट एडिशन रे वी आर गोइंग टू हैव पैनल डिस्कशन सम वेरी थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज एंड इनसाइट्स जोटा आज आपण को सामना रे इठी डिस्कस हबो शेयर हबो सो वी विल बिगिन विथ आवर panel discussion, but before that we would sincerely like to thank our presenting partner Some Ultimate Medicare and तांको ने कि गोटे खूब सुंदर एविटे अछि. Can we have that? Some Ultimate Medicare is a realization of that dream brought to you by Shiksha O Anusandhan, a formidable name in the sphere of professional education and healthcare in Eastern India. Some Ultimate Medicare promises a new dawn in the healthcare landscape of the region and is another step in a healthcare journey that began with the opening of IMS and Some more than a decade ago. This multi-super specialty quaternary care hospital is one of the largest hospitals in Eastern India, bringing together the finest medical talent and technology. In over 30 specialties here for patients from all walks of life, from pediatric to geriatric, with an objective of transforming lives in the region and beyond.
The building has 9 floors for the best patient-centric care. Basement 1 houses the medical records department and billing and for parking. Basement 2 is dedicated for oncosciences, assuring comprehensive cancer care with the latest available radiation therapy systems. True Beam Linear Accelerator, HDR brachytherapy, PET CT scan and gamma camera. Moving up the ground floor is where we receive the emergency patients. It has the emergency OT, OPD, trauma ICU daycare, the physiotherapy and executive health checkup, the radio diagnostics and imaging services, and the Center of Excellence Department of Cardiac Sciences. First floor has the administrative department and the OPD, critical and sensitive departments of laboratory services, dialysis, transplant unit, transplant OT, TICU. Second floor is the zone of silence, 9 OT complex, a cardiac intensive care unit, 2 medical intensive care unit, 1 surgical intensive care unit, a high dependency unit, 2 cardiac cath labs, and the central sterile services. Third floor has gynec, OT, pre-OP and post-OP with a delivery room near the neonatal intensive care unit to make childbirth an enjoyable occasion. Our patients have the option to choose from room types available as per the requests and convenience. Third, fourth and fifth floors have comfortable twin sharing rooms specifically designed to accommodate 2 patient beds. We understand the need for comfort, tranquility, luxury as much as safety and security. Comfortable executive and single rooms and the presidential suites provide the most restful experience. The 6th floor houses the kitchen from where a variety of nutritious food is offered. Some of all care, some ultimate Medicare. In our commitment to truly transform healthcare across the country, as the hand in our logo symbolizes care and lotus with energy circles reflects perfect healing care. We stand with one goal, one passion. Every patient, anytime. So that, ladies and gentlemen, was our presenting partner. Thank you to Some Ultimate Medicare for joining hands with us and making SUSHRUTA the Health Conclave, the first edition of it, I hope a grand success. And now we would also like to thank the SUSHRUTA the Health Conclave is powered by Ashwini Group of Hospitals. Thank you so much, sir. And also co-powered by Amri Hospitals, Bhubaneswar. We have a video. Can we have that, please?
तेबे चलित शताब्दी रे अर्थात 2019 रु विश्वर विभिन्न देश को व्यापी महामारी कोरोना एबे सुद्धा सक्रिय रही विश्व में दैनिक लक्ष लक्ष लोक संक्रमित हेउथवा
when we retrospect निश्चित भाव आम मन को आसो जे या होता जमी आम हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन देले पर भाविले हूँ तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन न देते चली था हूँ तो आमर कॉकटेल्स वुड हैव शेव्ड मोर लाइफ तो दैट्स जस्ट ए स्पेकुलेशन किंतु जो समय जहाँ कराई बेड वाइज ट्रीटमेंट वाइज approach wise vaccination wise that best has been done and as a state Odisha as a country India has shown to the world that we are not behind in technology medical science and we have shaped the life of our people आपन जदि मने रखिचंदी prediction बहुत बेसी थिला affection रो और death रो and India and Odisha have disproved that धन्यवाद डॉक्टर पंडा परवर्ती प्रश्न डॉक्टर पात्र सर जो प्रथम आसला कोरोना से आमे आदौ से प्रस्तुति आमर नाला इंफ्रास्ट्रक्चर नाला मेडिसिन नाला सेकेंड वेव विशेषकर ऑक्सीजन रे घोर अभाव जो अनेक लोक मृत्युवरण कले आम राज्य हुए तो एत संख्यार नंबर थी पारती किंतु देश में बहुत संख्यार लोक मले और आम राज्य कंटेक्स्ट वर्तमान जदि देखा भविष्य में आउ थे जदि कौन एपिडेमिक आरंभ हुए ताले कैन वी से दैट वी विल नॉट बी कॉट ऑफ गार्ड अनप्रिपेयर्ड सिचुएशन रे सिचुएशन जमती कोरोना रे हला से बड़ी स्थितिर परिवर्तन माने पुनरावृत्ति हम नहीं आम कहीपर कि निश्चय निश्चय देखो जिते आमर फास्ट रे बन्या आसला साइक्लोन आसला सेतेबेले ओडिशा को बहुत सेतेबेले माने WHO तुलन UN तुलन बहुत क्रिटिसाइज होता मात्र आज ओडिशा होची साइक्लोन रो गोटे बेस्ट मैनेजमेंट स्टेट जोटा कि इंडिया कौन सारा वर्ल्ड सेटा गोटे सेटा माना होची कि ओडिशा रो गोटे NDRF टीम जोटा कि बहुत रिनाउन अच्छी से ताकू जब आम एटा कंपेयर करबा जेमिति आपण कोविड रो फर्स्ट वेव एटा गोटे एक्सपीरियंस देन दिस एक्सपीरियंस विल टीच यू मेनी थिंग्स तो मु भाबुची जदि आउथरे किछि पैंडेमिक आसीबो ए एक्सपीरियंसटा निश्चय हमको बेटर वे हमको गाइड कर तार जोटा आम लाकुना रहा है आम निश्चय करेक्ट भी कर। धन्यवाद डॉक्टर पात्र परवर्ती प्रश्न पुणी डॉक्टर मिश्र पाक फेरुची एवं पचार चाहिए आपड़ जानते भल भाव आम देश में केवल नुह सारा पृथ्वी रे गोटे सेक्शन ऑफ पीपल अच्छा जो मैंने भी विश्वास कर कथा है एत लोक मृत्युवरण कलापर एत कोटी कोटी लोक एफेक्टेड है भी किसी लोकंर विश्वास जे यहाँ एत बड़ दुर्विपाक नथिला जेते ताकू प्रोजेक्ट कराला एवं ये गोटे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री रो गोटे कन्स्पिरेसी करिकरी से माने जो चारणा को बारणा करिकरी देखे ये जो अभियोग उठे यार किसी सत्यता अच्छी ना प्रकृति रे जेतिकी सीरियस आम नेले से सीरियस बेमारी प्रथम यार किसी सत्यता नहीं बरं आम जी भयावहता देखी ना तार आहरी भयावह था इवेन WHO कौच इवेन वेस्टर्न कंट्री गुड़ा करी डेथ जो 3 times मोर था से भी पूरा सठिक देख पाला आप जानते हैं इंडिया रे जो WHO पर रिपोर्ट आसला डेथ केते अधिका थिला बोली से किसी फ्रैक्शन भी जदि अधिका था डेफिनेटली आमर से डेथ अधिका था जहाँ रिपोर्टिंग होती कहते इवेन वेस्टर्न कंट्री गुड़ा भी 3 times अधिका डेथ होता तेणु भयावहता जहाँ हम देखीचे ताठू अधिक भयावह था तेणु से कहबानी यहाँ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री किसी थिला बोली एटा थिला आम निजे आखि आगे पेसेंट को देखुचे केमती से सफर करते देखुले से असहायता जे कि पेसेंट आम किसी करूँ जहाँ भी कले जो असहायता से आम देखीचु एटा तो केबे नथिला एटा किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री केबे नथिला कि एटा गोटे आम कहबा जे से माने एटा क्रिएट करते एत बड़ भयावह नथिला एवं एटा बहुत भयावह था डेल्टा वेवटार जो भयावहता ताको एक्सप्लेन करिहबनी डॉक्टर पंडा सांगे अच्छा इवेन प्रदीप्त भी कह से जो आम जो डील करूँ जो पेसेंट को इवेन मो एज रे जो पेसेंट को देखुली गोटे गोटे रूम रे के एक्सेस पेसेंट को देखुली म्यूजिकल चेयर भाया पेसेंट को टिके भल है बाहर कर देके आम अन्य मानक पुरे दौलू और जो सफरिंग आर जो देखुलू जो डेथ देखुलू से बहुत रियलिटर इवन निजक भी डर लगुला आमको तो हेनी तेना से भितर से जो माने जो पीपी किट पिंधि से मैंने कम कर जानते यार किसी सत्यता नुहे जो आलिगेसन अच्छी कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वाला जमी आमर से समय गोटे आम स्टेट गवर्नमेंट जो कले कि रेमडेसिविर इंजेक्शन टाक से नहीं गले कंट्रोल को माने डॉक्टर पंडा से पूरा गवर्नमेंट दौला आमको BMC दौला इंजेक्शन रात 12टा 2टा बेलू आम पठाऊँ लोक से इंजेक्शन दौले से गोटे आमको से इनिशियल
स्टिल आमर आडिक्वेट सप्लाई आसला पर्यंत आमको से पेसेंट मानक साहाଯ୍य कले दिने मत लगुनि गोटे घंटा भी आम सर्टेज किसी जेहेतु तो गवर्नमेंट सब माने इंजेक्शन निजे कंट्रोल को नहीं गले जमी आगुरी ब्लाक हो तो शुणी लक्ष लक्ष टकर ब्लाक है कि आम ओडिशा रे सप्लाई किसी डिस्ट्रप्शन है तेणु से कहीदे कौटी ना कौन फार्मासिटिकल इंडस्ट्री तो यहाँ नाला निश्चय नाला। धन्यवाद सर। डॉक्टर पंडा आप प्रथम वक्तव्य कहते से बाबद आलोकपात करुले जे आम मन लोक मन डर चलीगला लोक धरी ने जे ये कोरोना इज नाउ ओवर बैक टू नॉर्मल मास्क प्राय पिंधुना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो नहीं हाथ धोवा अभ्यास छाड़ीगला तो या द्वारा आमको भविष्य में पुणी सफर करिया पड़ पारे विपद आ गोटे विपद को आम टाणी आणुचु कि बहुत भल जिनटे पचार बहुत क्विकली मुझे तार एनसार रखी जोटा कि थीम अच्छी आमर ए पैनल डिस्कशन एपिडेमिक्स आर हियर टू स्टे द वे फॉरवर्ड सो आमे ए एपिडेमिक रु शिखिले कौन जोटा डॉक्टर मिश्र कहते आम शिखिले कौन सबुठु बड़ कथा शिखिले आम बिहेवियर तीनोटी बी मु आपको कहबी बिहेवियर बैकग्राउंड और बेसिक्स आमे गोटे पैंडेमिक को एक्सपीरियंस कले आ जहाँ डॉक्टर मिश्र कहते फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बा कौन सी ग्लोबल एजेंसी रो किछि भी छलना ए महामारी रे नहीं जो माने से भावुचंदी तांको आखिरे संदेह अच्छी कहीं पूरा विश्व पर गोटे विपद थिला और ताकू सामना करी आमे तीनोटी जिनस जानिले प्रथम हला बिहेवियर जो मास्क पीपी किट कैप ग्लोव्स गाउन सर्जन्स पिंधुले ओटी भितर डॉक्टर्स पिंधुले कैथ लैब रे और आईसीयू रे ताहा साधारण लोकों पड़ीगला कहीं होम आइसोलेशन रे पेशेंट रहिले मास्क पिंधिले पीपी किट पिंधिले ग्लोव्स पिंधिले सैचुरेशन देखिले डॉक्टर को रिपोर्ट कले यही जो लर्निंग है ताहा आमको भविष्य पैंडेमिक फेस करिबारे साहाय्य हेबो। द्वितीय कथा है बैकग्राउंड आमे जानिले जे आमर जदि कोमॉर्बिडिटीज अच्छी डायबिटीज अच्छी ब्लड प्रेशर अच्छी हृदरोग अच्छी श्वास अच्छी कैंसर अच्छी ताकू नियंत्रण रखिबा ताकू जदि आमे नियंत्रण रखुने आम ओजन ठीक रखुने डायबिटीज उच्च रक्तचाप को कंट्रोल करूने मद सिगरेट विभिन्न प्रकार तमाखु सेवन करुचे आमर रोग प्रतिरोधक शक्ति ठीक नहीं जोटा कि आम इम्यूनिटी कहूचे ताहले हुए तो ये इन्फेक्शन रे आमर सीरियस हबार बा गुरुतर हबार संभावना बेसी रहुची ताहला द्वितीय इन्फ्लुएंस और तृतीय इन्फ्लुएंस है जो भी इन्फेक्शन आसूची धरतु आम चतुर्थ वेव रे अच्छे चतुर्थ वेव पर जहाँ भी दरकार होची क्लस्टर एवॉइड करवा काली रथयात्रा अच्छी 15 लाख लोकंर समागम हम आम कौन सतर्क रहिबा मास्क जीवन चिरसाथी हो जाइए हाथ धोइबा तो निश्चय सैनिटाइजेशन करवा जते पारिबा सामाजिक दूरता रखिबा क्लस्टर एवॉइड करवा आउ जदि किसी लक्षण देखा दिए ज्वर हो काश हो कहीं चतुर्थ वेव रे आमर केवल ज्वर बहुत परिमाण में देखा दूची अन्य लक्षण अपेक्षा जो वैक्सीनेशन पर जो इम्यून रिकन्स्ट्रक्शन होती रोग प्रतिरोधक शक्तिर किसी परिवर्तन होती से आमर प्रेजेंटेशन भिन्न प्रकार रोचे यह अल्पे बहुत समस्ते अनुभूति नहीं जाइछन्ति और प्रस्तुत हो जाइछन्ति तेणु इन्फ्लुएंस है यही महामारी जाई नहीं आम फोर्थ वेव रे अच्छे एठी मध्य किए गुरुतर हवार संभावना अच्छी जो मनकर कोमॉर्बिडिटी अच्छी तो आम निश्चित भाव में सुस्थ जीवन धारा फॉलो करवा आमर इम्यूनिटी को ठीक रखा द्वितीय तो आमर जो बिहेवियर्स आम शिखिले ग्लोव्स पिंधिबा मास्क पिंधिबा पीपी किट पिंधिबा कैप पिंधिबा सामाजिक दूरता रखिबा हाथ धोइबा ताकू जमा भूलिबानी ता द्वारा डायरिया भी कमिबो ता द्वारा ट्यूबरक्लोसिस भी कमिबो ता द्वारा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी कमिबो पतला झाड़ा बांति ठू आरंभ करी एंटेरिक फीवर जाए भी कंट्रोल हो पारे से हेल्दी प्रैक्टिस आउ जहाँ भी आसूची धरतु वर्तमान मंकी पॉक्स आसूची आमको बुझिया हम मंकी पॉक्स कौन स्मॉल पॉक्स साथ तार रिलेशन कौन वैक्सीनेशन कौन प्रोटेक्ट करिवो को पटु व्यापे सेक्सुअल रिलेशन साथ तार कौन संपर्क अच्छी ए सबू जिनस आमको क्विकली पिकअप करी प्रस्तुत हो पड़ो तो आम बैकग्राउंड स्ट्रंग रखिले
बिहेवियर ठीक रखिले आउ बेसिक्स कमिंग इन्फेक्शन रो एक्जिस्टिंग पैंडेमिक रो ठीक रखिले निश्चित भाव में आम फोर्थ वेव कौन कमिंग पैंडेमिक बिकज यही सेंचुरी रे आम स्वाइन फ्लू देखीचे आम सर्स देखीचे आम मार्स देखीचे आहरी भी किसी भाइराल डिजीज आसीपारे जोटा कि आम इमर्जिंग भाइराल इन्फेक्शंस कहू किसी भाइरस रो पोटेंशियल थाए जो माने कि ग्लोब्स रो गोटे अर्धरु अन्य अर्ध को जाई पारंती आ आजिकल कम्युनिकेशन बहुत बढ़ी गलानी फ्लाइट्स एयर इंटरनेशनल लोकल ट्रावेल्स आ सेथिरे आग काल रे ए जो भूताणु ए जो पैरासाइट्स शिप्स रे आसुथुले साउथ आफ्रिका रु जहाजर भेसेल रे लोक मानकु कृतदास मानकु पुरेई अमेरिका और यूरोप अणा जाउथला और सेठी किछि मूसा आसी जाउथले सेठी किछि ऑर्गेनिज्म आसी जाउथले सेठी किछि भूताणु आसी जाउथले जे कि सेई देश रे व्यापी जाउथले आ महामारी होउथला किंतु आजिकल कम्युनिकेशन बहुत बढ़ी गलानी प्रत्येक स्टेप रे हमको प्रस्तुत रहयो पड़िबो आ एई तीनोटी अस्त्र जदि आपन ठीक अछि निश्चित भाव में आमे जहाँ भी आसीबो ताकू सामना करि परिबा। धन्यवाद डॉक्टर पंडा। डॉक्टर पात्र आपन गोटे लेमैन हिसाब से मोर गोटे प्रश्न आम गला 2 वर्ष भितर विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स देखीचे केवल आम देश में नुह सारा पृथ्वी रे रिपोर्ट सब बाहरी जो थे कि संदेह प्रकाश करे इट्स अ मैन मेड पैंडेमिक बोली एवं यार ओरिजिन होची गोटे लैब रे यूहान रे बोली कहा जाए एवं सेटा परवर्ती समय सत्य बोली मने भी होती जिते कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गोटे टीम जाइला सहित कोऑपरेट कले नहीं चाइनीज अथॉरिटी तथ्य देले नहीं सहित कोऑपरेशन जड़े ताले आपण डॉक्टर हिसाब रे आपण कौन कहिबे एथिरे किछि सत्यता थिबार संभावना अछि कि यही तो यार आंसर तो ये पर्यंत मिस्ट्री स्टिल जना नहीं कौन है एक्चुअली जहाँ भी होमको केमी फेस करा पड़ो से देखा पड़ो गोटे कथा यहाँ लाइक हॉलीवुड स्टोरी आप देखिए मम्मी रिटर्न्स लाइक ओमिक्रॉन रिटर्न्स ओमिक्रॉन एवं गला ओमिक्रॉन BA1 BA2 नाउ इट इज कमिंग लाइक BA4 BA5 आम यहाँ केमी फेस करा गोटे पर गोटे वेव आसो केते वेव आसो कौन पर आसूँ से देखार अच्छे फर्स्ट ऑफ ऑल है इंडिया रे 1.97 बिलियन वैक्सीन दि जाइए ताहिर मात्र हूँ 44 मिलियन जोटा कि प्रिकसन डोज दि जाइए भावतु टोटाल 2टा डोज दि जाइए 1.97 बिलियन मात्र वैक्सीन बूस्टर दि जाइए 44 मिलियन माने आप गैपटा रोचे एवं फोर्थ वेव आसबार कारण होची आप बूस्टर डोज जदि 6 मास पर जदि बूस्टर डोजटा न नेबे एलिजिबिलिटी अच्छे 18+ मात्र आमर जोटा गाइडलाइन जोटा देइचंदी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि फ्रंटलाइन वर्कर को खाली दिया जदि समस्त जदि बूस्टर पाई जदि एप्लाय न करेंगे जदि सेटा जदि एप्रोप्रिएट न हो सब वैक्सीन भी एक्सपायरी डेट रोचे आप जो सेरम इंस्टीट्यूट है कि भारत कोवैक्सीन है से एक्सपायर रोचे अगस्ट एंड सेप्टेम्बर तेणु वैक्सीनटा जिते जल्दी रेपिडली आप प्रिकसन डोज जिते जल्दी समस्त को दिज्व जहाँ भी जना जा कि प्रिकसन डोज द्वारा आप सीवियरिटीटा कमिब सेटा आम जदि आमर भाइरस अनुसार आम वैक्सीन स्ट्राटेजी चेंज करा पड़ो आप नुआ नुआ भाइरस आसूँ अनुसार आप रेपिडली डेभलपिंग आप नुआ नुआ वैक्सीन तैयारी करा पड़ो जहाँफल यहाँ आप न्यूट्रलाइजिंग एक्सकेप जोड़ा रोचे वैक्सीन ये जो नुआ भाइरस जोड़ा आसा एस्केप हम ना आम ये जो भाइरस आसूँ BA4 BA5 सेटा प्रायतः लोक कहते हैं ओमिक्रॉन अन्य ओमिक्रॉन बोले कहीं BA1 2 भी डिफरेंट रोचे दो तार सीवियरिटीटा कम रोचे सेटा 6 मास पर आप जेकोसी वैक्सीन नियंतु आइदर फाइजर नियंतु मॉडर्ना नियंतु mRNA वैक्सीन जहाँ भी नियंतु 6 मास पर तार एफिकेसी रोना तार एफिकेसी इवेन नेगेटिव भी रोचे तेणु जोटा भी आप मेजरमेंट कर लोक भावुं मोर न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी मोर देन 250 अच्छे मुझे सेफ से भूल धारणा से जोटा इवेन से कहुँ कि इट इज माइट बी डेंजर टू योर बॉडी बिकज दैट इज नॉट न्यूट्रलाइजिंग योर न्यू भाइरस तेणु खाली मेजरमेंट नहीं कि आम सेल्फ भावीदेवानी कि आम प्रोटेक्ट अच्छु से नुह से एंटीबॉडी जोटा अच्छी दैट माइट नॉट बी प्रोटेक्टिव अगेंस्ट योर न्यू भाइरस तेणु आम जमी डॉक्टर पंडा कहते कि बिहेवियर निश्चय रखा पड़ो ता सहित जेनोमिक सिक्वेंसिंग थर्ड बूस्टर डोज वैक्सीन जोटा अपडेट आमको निहाती दरकार नुआ नुआ भाइरस अनुसार आप नुआ नुआ वैक्सीन अपडेट करा पड़ो से पुराना वैक्सीन को धरिकी आम जब चले दैट एंटीबॉडी विल नॉट गोइंग टू हेल्प यू फॉर फ्यूचर जनरेशन ऑफ भाइरस सो दिस माने लाइक यू हैव टू अपडेट सब अपडेट रहा पड़ो ये जो वैक्सीन भाइरस ट्रेन जेनोमिक सिक्वेंस सब साइमल्टेनियसली रिसर्च करी नुआ नुआ वैक्सीन आसिया बाध्य। डॉक्टर मिश्र जहाँ कहले डॉक्टर पात्र जे आमको गोटे वैक्सीन को धरिकी रहीगले हम नहीं आमको कन्स्टेंटली अपडेट करा पड़ो
तो वर्तमान जो स्थिति से भविष्य में जदि गोटे पुणी गोटे पैंडेमिक बा एपिडेमिक आरंभ हुए से आम आउ अधिक कौन प्रस्तुति करने आवश्यक केवल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दृष्टि नुह लोक लोक केमती प्रिपेयर हे अधिका दुईटा जिनस कहे लोक केमती प्रिपेयर हुए सबुठ है डॉक्टर पंडा जमी कहते आमको निजे बिहेवियर को चेंज करा पड़ो आमको गोटे एक्सेप्ट करा पड़ो जदि किसी जो मैंने हेल्थ केयर एजेंसीज कि जदि एक्सपर्ट्स मैंने कहते गोटे बड़ धरण पैंडेमिक कि एपिडेमिक आगे या करा दरकार आम ताको बिलीव करा पड़ो और जहाँ जहाँ इंस्ट्रक्शंस आसो फॉलो करा पड़ो दुई तीन टा डॉक्टर पंडा भी कही आमर निज बॉडी इम्यूनिटी की आमको बिल्टअप करा पड़ो से आमर जोड़ा कहती संतुलित खाद्य एवं रेगुलर एक्सरसाइज जोटा बॉडी इम्यूनिटी की बहुत भल कर वेट उपर कंट्रोल और जो क्रोनिक डिजीजेस अच्छी ताको प्रॉपर्ली कंट्रोल सेटा सबुठ आम जोटा कि आम हाथ अच्छे से आम कर आ तृतीय कथा वैक्सीनेशन जहाँ भी आडल्ट वैक्सीनेशन आमर एलिजिबल अच्छे आम फ्लू वैक्सीनेशन लोक मैंने नौना कि मो रिकमेंडेशन कि फ्लू वैक्सीन जोटा कि प्रति वर्ष से ट्विक करती डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेन आ स्वाइन फ्लू गोटे टाइप फ्लू से 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लू से वैक्सीनटा से अवेलेबल तेणु ताकू जमी नवा कथा गोटे दृष्टि कहली जमी आम कोविड आम जो बर्तमान ओमिक्रॉन स्पेसिफिक वैक्सीन जोटा टी आगुरी कहते जोटा आसूची बर्तमान से यूएस FDA अप्रूवल देदेला 28 तारीख में गोटे बोथ फाइजर जो मॉडर्ना आणुंट जुलाई मस अवेलेबल हो गोटे ओमिक्रॉन स्पेसिफिक वैक्सीन जोटा कि बूस्टर हिसाब से अप्रूव कले सेटा नेला पर कौन कि आपंकर इन्फेक्शन होबार रिस्कटा कमिज आगुरी कौन जो वैक्सीन आम नौचे यहाँ आपको सीवियर कोविड रु प्रिवेंट करुच्ची किंतु आपन इन्फेक्शन सिग्निफिकेंट प्रोटेक्शन दौनी यहाँ इन्फेक्शन रु प्रोटेक्शन देव तेणु जहाँ जहाँ आप वैक्सीन बाहर रिसर्च रे जो वैक्सीन गुड़ा बाहर एवं जो इंटरवाल से मैंने एक्सपर्ट्स मैंने डिसाइड करेंगे 6 मास की प्रति वर्ष आमको गोटे वैक्सीन नवा पड़ो बीट आमर कोरोना हो कि फ्लू हो कि अन्य डिजीजेस हो आमको तक एक्सेप्ट करा पड़ो और से वैक्सीनेशन टाक नवा पड़ो से गवर्नमेंट को भी करा पड़ो लोक अवेयरनेस आने पड़ो और एनश्योर करा पड़ो वैक्सीनेशन टा गोटे इंपोर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ ये आ गोटे रहा आम केमी आगू को माने जो एपिडेमिक आम गोटे कि पैंडेमिक गोटे शिखेला जे आमको आमर जो एटीट्यूड है ताको चेंज करा पर्टिकुलरली वर्क एनवायरनमेंट आमको देखिए पड़े क्राउडेड वर्क प्लेसेस बर्तन दैट शुड बी द इवेंट ऑफ पास्ट आमको जो एनवायरनमेंट रखा पड़ो से जमी स्पेस थी अधिका वेंटिलेशन भल थी सेटा को ध्यान देवा पड़े सेटा को जब आम न रखा क्राउडेड वर्क प्लेस जब रखा इल वेंटिलेटेड प्लेसेस सेटा एगेन दैट वाज प्राइमरी कारण जो देखिए गोटे गोटे बैंक रे जड़े होता एंटायर बैंक स्टाफ को अफेक्टेड हो जाता तेणु तापर भी आमको एबुठू भाविया पड़ो स्कूल जो पिला माने पढ़ुंट भितर केमती टिके आम टिके स्पेसेस बढ़े पारिबा केमती भितर वेंटिलेशन केमती स्कूल गुड़ा के इम्प्रूव पड़ो आमको यही इंफ्रास्ट्रक्चर गुड़ा प्रथम एबुठू डेवलप करदे पड़े सो दैट फ्यूचर जदि किसी इवेंट है आम प्रिपेयर्ड थी जमी पिला स्कूल नष्ट न हो पिला स्कूल WHO कहला से बहुत पिलांकर परमानेंटली से मैंने स्कूल मिस करदे एवं सेटा गोटे हेल्थ एजुकेशन उपर बहुत बड़ सेटा गोटे नेगेटिव इम्पैक्ट आणला से से बहुत आगुरी कहते जिवेन थर्ड वेव बेले से कहते स्कूल टाक बंद नक खोल जाऊ WHO भी से कहते स्कूल गुड़ाक खोल जाऊ तेणु से कौटना गोटे कहूँ आम जब टे निजे केयरफुल रहा जहाँ जहाँ एक्सपर्ट्स मैंने कहते आम क्वेश्चन नक एक्सपर्ट एडवाइस टाक आम ग्रहण करवा वैक्सीनेशन निजर माने बॉडीर हेल्थ आम जो नवा एवं जदि अन्य मानक सचेतन करवा जे आपण मैंने या करतु ताल हे तो आगू जाकि बड़ धरणर पैंडेमिक किंबा जदि एपिडेमिक आसला आम तो हैंडल कर डॉक्टर पंडा गत 2-4 दिन भितर आम राज्य में पुणी कोरोना ग्राफ ऊपर को जीवा आरंभ करछि एवं संख्या बढ़ी चली इन्फेक्शन विशेषकर खोर्धा जिले में टे चिंताजनक परिस्थिति या नहीं कि आम केते चिंतित हवा आवश्यक ना ना ये चिंतार कारण नुहे वेरी एप्रोप्रिएट आम चतुर्थ वेव देकी गति करुचे और एटा प्रेडिक्शन भी थिला जून एंड रे द 4th वेव विल टच ओडिशा जोटा कि हेची आउ कम बेसी आम जदिओ जानीचे आमर रोल कौन आम ताको किछि समय पई कम्प्लासेंट हो जाइए आम मास्क ठीक पिंधुने दूरता ठीक रखुने बाहाघर व्रतघर फ्यूनरल फंक्शंस फुल फ्लेजेड रे चली तो आम देखिलु यही वेव रे जो माने यूजुअली ट्रावेल कले कहीं फॉर्चुनेटली ओडिशा रे एबे जाए एफेक्ट नथिला जो माने कंट्री भितर बा कंट्री बाहर को ट्रावेल कले बहुत मोर डॉक्टर फ्रेंड से माने एडीए जाइथिले हमर डायबिटिक कॉन्फ्रेंस रे आफ्टर दे कैम बैक जो माने महाराष्ट्र गुजरात जाइथिले
came and became symptomatic. तो सेतेबेले से ट्रावेल करछंती हुए तो कोठ ना कोठी कांटेक्ट रे आछंती केयरफुल हेई नाहंती तो मोर मेसेज रहबो जदियो आमे वैक्सीन नैचे वी आर इम्यून एंड we know the behaviors, we know the pattern, and fortunately last wave रे आमे एते मृत्युहात हेइनी तथापि जो मानकर कोमॉर्बिडिटीज अच्छी जो मानकर factors for the severe or moderate disease अच्छी they can have a different course than many people. So हमको other way around मु कहिबी जदियो majority लोक home isolation रहुचंदी but still we have a mortality in the country. Though it's very less, but still we have a mortality in the country. से 15 जन मरंतु से 50 जन मरंतु से मरुचंती कहीं तो unfortunately our patient can be one among that. So एटा को भाभी हमें strictly at least for 1 month ए जुलाई मासटा हमर behavior को control करिबा हाथ धोइबा क्लस्टर एवॉइड करिबा डिस्टेंसिंग रखिबा मास्क पिंधिबा आउ जोटा प्रोफेसर पात्र कहिले that's very relevant जोटा डॉक्टर मिश्र कहिले very relevant booster dose जो माने नहीं नहांती after 6 months of the second dose किंबा जो मानकर एंटीबॉडी विन करी आसिलानी they have a higher risk of severe infection and also different types of presentation and we cannot forget that still we are in pandemic. Pandemic has not left us, so let us be careful, save every life. Government is prepared, we have bed, we have vaccine, we have all drugs and consultants. Our hospitals are ready with all amenities. SCB COVID hospital is 600 bedded hospital prepared with 150 ICU bed throughout. We have not closed that in spite of the decrease in number. So डरिबार किसी कारण नहीं, but let us stay careful and prevent the virus not get infected at all because nobody knows what will be the long COVID. आपण भावुଛନ୍ତି नहीं माइल्ड हबो अरे ता परे कोन हबो कार फाइब्रोसिस हे जिवो कार गोटे डायबिटीज बाहरी जिवो so that there is a possibility of post COVID or long COVID also. It's better not to get infected by virus. Let us take that message, change our behavior, protect ourselves, our family, our friends, and wait for at least 6 months for the pandemic to leave us, get endemic, then we can be breathing relaxedly that we are no more in danger. Thank you, Dr. Pandra. एवं शेष प्रश्न आपको सर जानते आप भल भाव आसंता काली आमर रथ यात्रा एवं 2 वर्ष पर पब्लिक पार्टिसिपेशन सरकार निष्पत्ति नहीं जेहेतु 2 वर्ष धरिक भक्त मैंने बड़दाण्ड रथ टाणी पारि ना एथर अनुमान कराऊँच अन्य वर्ष अपेक्षा ए वर्ष हुए तो आहरी अधिक संख्यक लोक पुरी रे रुंड हेबे 15 लाख पर्यंत संख्या जाईपारे बोली अनुमान करा जाउची तो आप भावुंट जे या द्वारा गोटे पुणी आउ थे गोटे भाइरस स्प्रेड करिवार गोटे सुजोग सृष्टि हम बा एथर हुए तो रथ यात्रा रे एथर भी पूर्व 2 वर्ष भली बिना लोक भक्त रे करवा उचित ही था कौन कहबे विषय देखो गोटे कथा है कि आमर मनुष्य जमी आम आगुरी जन्म होइछे आम के चाली चलन चेंज कर पारे आम जिते भी कथा कहले भी मास्क पिंध 2 वर्ष है पिंध लोक बोर सेटा केबे भी केते दिन लोक मास्क पिंधिक रहिबे केते दिन भोजी भात हबनी केते दिन आपन सेटा मना करि पारे आपन जानि नेक्स्ट फ्यूचर कोन अछि नै आम जदि जानिछे 2 वर्ष भितरे कोविड सरी जीवो ताले लोक फ्री लोक भाबिबे कि नै 2 वर्ष भितरे हम मास्क पिंधु तापर पिंधिबु आमर स्टोरी केबे एंड होछि जणा नै तेणु सेटा को हम केबे जहाँ कल्चर अच्छी से कल्चर हम बंद करें अबे जहाँ भी करछंदी गवर्नमेंट एबे सब दैतापति मानक समस्त को बूस्टर डोज दौरान कहीं इन्फेक्शन केमी अन्य मानक स्प्रेड न हो सब लोक मानक कहते मास्क पिंधा जाऊ से आरटीपीसीआर भी तैयारी करा जाउची रेपिड एंटीजेन टेस्ट करा जाउची कहीं रेपिडली डिटेक्शन करने सरकार तांको तरफ तैयारी होचंदी आमे कल्चरटा भी ता अनुसार चलिबे लोकंकर गोटे रिलीजियस फेथ आमे सेटा केते दिन करिक बंद करि परिबा आम गोटे भी सब बैलेंस कर चलिए गोटे जीवन और जीविका सब कन्स्टेंट पैरेलल हिसाब से चलो तेणु साइंस रिसर्चटा भी अनुसार पैरेलल ही चलो सेटा साइमल्टेनियस ना आम केवल टैकल कर ना एगेन मुझे कहबी आम जोड़ा भी गवर्नमेंट गाइडलाइन अच्छी खाली फ्रंट लाइन वर्कर मानक खाली बूस्टर डोज नुह आमर एबव 18 इयर्स जहाँ भी वैक्सीन अच्छी
एबव 18 इयर्स मान समस्त को बूस्टर डोज कंपलसरी करवा निहाती आवश्यक ता सहित आप सिप्ला कही मॉडर्ना आनब कि आप जाइडस है कि आप इ वैक्सीन जोटा भी अच्छे जो अलरेडी डीसीजीआई एप्रुवाल से तथापि से वैक्सीन ए पर्यंत इंडिया रे अवेलेबल ना कहीं ना से वैक्सीन टाक आप जिते स्प्रीड न करेंगे गोटे पर गोटे वेव आसो ही आसो आम के कहबानी कि भाई तुम्हें महाराष्ट्र जाओनी कि दिल्ली जाओनी कि फरेन जाओनी ये सब आना जाना सब चली तेणु सब डेभलपिंग कंट्री जहाँ भी वैक्सीन जब समस्त को आम इक्वल न देवा तेल ये वेवटा के सरना तेणु समस्त डेभलप मेन वैक्सीन जहाँ भी नुआ नुआ भेरिएंट आस प्रायतः आप कौ कंट्री आस डेभलपिंग कंट्री नुआ नुआ भेरिएंट आस कहीं जेहेतु एपर्यंत बूस्टर वैक्सीन से 70% बूस्टर वैक्सीन से दि जाए ना जहाँफल नुआ नुआ भाइरस नुआ नुआ भेरिएंट आस तेणु मास वैक्सीनेशन इज ओनली स्ट्राटेजी टू प्रिवेंट फर्दर इमरजेंस ऑफ न्यू वेरिएंट सेटा नहले इमिति गोटे 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 मम्मी रिटर्न्स भाई गोटे गोटे हॉलीवुड स्टोरी गोटे गोटे फिल्म आसुथि। धन्यवाद डॉक्टर पात्र भावुची आज जो पैनल डिस्कशन से अनेक कथा आम जाना पाइले जमती बूस्टर डोज रो इम्पोर्टेंस कौन डॉक्टर पात्र कहले एवं आमर जो 2 वर्ष धरिकी आमको जो कहुई जो प्रकार सोशल बिहेवियर आम रहा कथा है सीटा आगु को मध्य जारी रखार आवश्यकता अच्छी मु भावुची दिस वाज अ वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन ऑन what we need to do to face a future pandemic. That concludes this session and we will move on to the next panel discussion, second section. I'll thank all my panelists for this insightful discussion and thank you. Thank you very much. I would request our panelist and moderator to kindly stay back with us because it was really a very, very insightful session. I would invite Sandeep sir and Punya madam to felicitate our panelist and our moderator. We will begin by felicitating Dr. Niroj Kumar Mishra, our panelist. Thank you very much, sir. I would request sir and madam to kindly felicitate Dr. Jayant Kumar Pandaji. Thank you very much. And now I would request sir and madam to kindly felicitate Dr. Pradipta Patroji. Thank you very much. And now the man who very beautifully moderated this very important session, Shri Sandeep Sahuji. Thank you very much. I thank our moderator and our panelists for the session, for their insights, for their presence. Thank you very much. I would thank Sandeep sir and Punya madam for doing the honors. May you please take your seats. And now, moving on to our next panel discussion. The topic is Cancer is Beatable, the Dostarlimab Hope. Yes, for decades together, we have been haunted by cancer, that there is no cure, but finally we have a ray of hope. And yes, we are going to have a detailed panel discussion on it. I would first of all welcome the moderator for the session, Shri Balabhadra Ratha. A known name in Odisha media, Shri Ratha is currently associated with Doordarshan and Odisha Sambad as a newscaster and journalist. He has worked in different news organizations like Samay, Kalinga TV and News World Odisha. He is also a columnist, a literature and a researcher, and won several awards and recognitions during the past decade as a media personality. Now, as the panelists for the session, I would welcome and invite onto the stage our eminent oncologist, Dr. Kripa Sindhu Panda sir. Sir, apanko bahut bahut swagat anurodh karbi manch uprku asi manchasin hebe. Our next panelist for the session is the head of Department of Surgical Oncology, AIMS Bhubaneswar, Dr. Madhavananda Kara. Sir ko madhyam bahut bahut swagat anurodh karbi manch upre asi manchasin hebe. Our very next panelist for the session is the head of Department of Medical Oncology, Some
Hospital, Dr. SUSHRUTA Panda. Sir ko madhya bahut bahut swagat. I would welcome our panelists and I will hand over the session now to our moderator, Shri Balabhadra Ratha. थैंक यू मैम समस्त को नमस्कार मंचासीन समस्त आमर अतिथि एवं आजिर यही स्वतंत्र सत्र अधिवेशन रे जोग देथिबा समस्त आमर बंधुवर्ग एवं गुरुजन मु द्वितीय सत्र को प्रवेश पूर्व अनुरोध करुछि आमे कर्कट रोग उपरे एक छोटिया वृत्तचित्र प्रस्तुत करिछु ताकू उपस्थापन करिवे। कैंसर बा कर्कट जो रोगटीर ना शुणिले भी मनरे आसी जाए एक स्वतः प्रवृत्त भय भेषज विज्ञान एत अग्रगति सत्वे भी कर्कट रोगर हो पारि नाही संपूर्ण निदान। एक तथ्य अनुसार 2018 मसीह विश्व में होता समुदाय मृत्युर द्वितीय प्रमुख कारण थिला कर्कट रोग बा कैंसर। प्रति 6 जन रे होइथिला जनकर मृत्यु। 9.6 मिलियन लोक कर्कट रे पीड़ित होई मृत्युवरण करथिले। सेहीपरि अन्य एक तथ्य अनुसार 2010 मसीह 2019 मसीहा मध्य समग्र विश्व में कर्कट आक्रांतों संख्या 21% बढ़िथिबा बेले मृतकों संख्या बढ़ी 26%। यह रोगर उपचार पर आज विश्वर बहुराष्ट्र प्रयासरत हेले सद्यतम सुसंवाद है अमेरिकार एक कैंसर गवेषणा प्रतिष्ठान डोस्टारलिमाब नामक एक औषध को करिसेंति विकसित जहाँकि कैंसर चिकित्सा क्षेत्र में संचार करिछि एक आशार आलोक निराकरण को नहीं एक उज्जवल संभावना। डोस्टारलिमाब को नहीं भेषज विशेषज्ञ माने केते आशावादी एवं यह केते दूर फलप्रद हो पारिबो बोली सेमानकर मत से नहीं आमर द्वितीय सत्रर विशेष आलोचना कैंसर महोषधिर आशा। धन्यवाद। हेलो आपण देखुथिले जे वृत्तचित्र रे कर्कट भले एक रोगर तार निदान उपचार एवं जो वर्तमान औषध बाहरी विकसित होइछि उद्भावन होइछि अमेरिका रे से संपर्क रे एक सम्यक प्रतिवेदन आम सहित अछंती आज टिके आगु मैडम समस्तंकर नाम कहिसेंती आम सहित अछंती एमिनेंट ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर कृपा सिंधु पंडा आम सहित अछंती डॉक्टर माधवानंद कर सर हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी एम्स भुवनेश्वर आम सहित अछंती मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग मुख्य सोम हॉस्पिटल डॉक्टर सौम्यसुरत पंडा आमे आरंभ करवा कार्यक्रम। सर आपण मु प्रथम जानवा चाहिए एबे जो औषध बाहरी ताकू नहीं आप केते आशावादी? देखो कैंसर किसी नुआ रोग नुहे एमती मझे मझे औषध बाहर चिकित्सा चली आम हाथ में 3टा कथा प्रथम है सर्जरी काटिकी उड़े दियो जदि प्रथम अवस्था रोगी आसला प्राय सब जगार ऑपरेशन हो पार तापरे द्वितीय तृतीय अवस्था को गले कि तारी सांगरे आजिकल प्रिंसिपल है कंबाइंड ट्रीटमेंट जिते बड़े रोगी जहाँ चाहिए कैंसरटा देहर जेकोसी ऑर्गन रु हो पारे बयस अनुसार टिके विभिन्न ऑर्गन रु विभिन्न हुए डिटेल आम छुआंकर टिके अलग जिनस हुए बयस बढ़िले अलग जिनस से जहाँ हो पारे तेणुक सबू एबे जो नुआ औषध बाहरी मलद्वार कैंसर रेक्टम कैंसर रे से गोटे एक्चुअली स्पेशल औषध बाहर करचंती आमर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट अच्छी आपण मैंने स्टार्ट कले सेतुरु आमर रेक्टम कैंसर इज वेरी लेस एनीवे से ड्रग उपरे लेट हिम टॉक
बेसिकली कैंसर ट्रीटमेंट पाई आम मैंने जानिथिबा भितरे सर्जरी आउ रेडिएशन बा जोड़ा रश्मिरंजन लाइट पड़े ताकू चिकित्सा करवा आउ थर्ड रे होची कीमोथेरापी। तो यही तीनटा प्राय लोक मैंने जानी सर्जरी रेडिएशन आउ कीमोथेरापी किंतु ता बाद गुड़ाए सब आधुनिक चिकित्सा आसलानी ता भितर गोटे होची टार्गेटेड थेरापी। तेणु किछिटा औषध अच्छी जोटा केवल कैंसर सेल उपर आक्रमण करे। तेणु जमती कि सपोज गोटे एटम बम पकई गोटे सहर नष्ट करवा किंबा शत्रु को चिनी 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 गुली मारिया। तेणु टार्गेटेड थेरापीटा सेमती केवल स्पेसिफिकली कैंसर सेल उपर ही आक्रमणटा हम साइड इफेक्ट कम थाए। ताको छाड़ी दे इम्यूनोथेरापी करी थाए। इम्यूनोथेरापी माने बॉडीर इम्यूनिटी आमर जमती कि आमको ठंडा हेले किसी समय कमी जाऊँगी कि गोटे पतला झाड़ा है आम बॉडीर इम्यूनिटी औषध न खाई भी कमी जाऊँगी कि सामान्य औषध खाई कमी जाऊँगी सेमतिका डोस्टारलिमाब जो औषधटी बाहरी दैट इज इम्यूनोथेरापी। इम्यूनोथेरापीर अर्थ आम निजर बॉडी को इम्यूनिटी स्टिमुलेट करके से कैंसर सेल को आक्रमण करुच्ची कि मारुची। एपाई जेम्स एलिसन यूएस रे एवं जापान जड़े डॉक्टर से मैंने नोबेल पुरस्कार पाई इम्यूनोथेरापी को डिस्कवर करके 4 वर्ष तले से नोबेल पुरस्कार पाई। तापर इम्यूनोथेरापी गुड़ा गुड़ाए सब ट्रायल्स रे आसिकी देखो दे आर हैविंग ए वेरी गुड रेस्पॉन्स। कमिंग टू दिस यही पर्टिकुलर ड्रग टी एटा व्यवहार है रेक्टाल कैंसर रोगी मान भितर से आर्ली स्टेज थिला। आर्ली स्टेज माने सेटा खेले नहीं चारिड़े खेले नहीं सेटा सीमित होइकी थिला रेक्टम किंवा ता पाखापाखी एरिया को सीमित होइकी थिला। टोटाल से माने प्लान करथिले 30 टी रोगी नवा पई। डाटा जोटा डिस्क्लोज होइची सेटा केवल 12 टी रोगी डाटा डिस्क्लोज होइची। तेणु 12 टी रेक्टाल कैंसर रोगी से माने सेमतिका नहीं जे सब जनरल रेक्टाल कैंसर रोगी माने जहाँ को भी मलद्वार पाखे कैंसर है से दिहला सेमतिका नहीं तार गोटे स्पेशल कैरेक्टर थिला तार बॉडी रे किछिटा स्पेसिफिक फीचर्स थिला सेमतिया रोगी को बाछिकी 12 टी रोगी को बाछिकी तांको इम्यूनोथेरापी कर औषध दिया होची। से औषध देला परे से माने देइचंदी टोटल 6 मास में देइचंदी 9 थर इंजेक्शन देइचंदी। 9 थर इंजेक्शन दे सारा 500 मिलीग्राम आसूँ से 500 मिलीग्राम 21 दिन अंतर 9 थर देइचन से इंजेक्शन टी 6 मास भितर से सरी जाइए। तापर से जो चेकअप कर देखी जे ना से कैंसर गुड़ा मिल जाइए। चेकअप कर आंगुली पर देखते घा ना MRI कर देखते ना घा ना बायोप्सी कर जो जगार घा लगी से भी घा ना। तेणु से बारंबार 2 वर्ष से चेकअप कलापर से देखुं जे ना रोग फेरी ना से ड्रगटा एत हाइप्रे आसी कारण 12 टी कैंसर रोगी जो मान आगुरी आम मान सर्जरी करा पड़ूला कीमोथेरापी देवा पड़ूला रेडिएशन देवा पड़ूला से माने बिना कौन सर्जरी कीमोथेरापी किंबा रेडिएशन रे केवल इम्यूनोथेरापी नहीं कि से माने भल अच्छा। हैविंग सेड दैट आम मैंने सावधान हवा दरकार केवल 12 टी रोगी स्पेशल कैरेक्टर वाला 12 टी रोगी आउ मात्र फॉलोअप तांकर 2 वर्ष पर्यंत होती। तेणु बहुत शॉर्ट डाटा बहुत कम लोक रोगी डाटा बट डेफिनेटली इट इज वेरी एनकरेजिंग और स्ट्राइकिंग। It will cost 1.4 crores for one dose. एमती 25-30 वर्ष पूर्वे भी गोटे मैजिक बुलेट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी फॉर कैंसर बाहर थिला। आमे सेतेबेले नुआ नुआ डाक्तर होतलु बहुत भावुतुले हो किंतु विशेष प्रोग्रेस हैलानी। देखा जाऊ भगवान करंतु हो बाहर औषध रोगी भल हंतु। डॉक्टर कर मु आपंठू जानवा चाहिए जे मेडिसिन बाहरला परे मध्य ट्रीटमेंट आवश्यकता पड़ो ना नहीं। बहुत भल क्वेश्चन टे पचार देखो डॉक्टर पंडा जमी कहले ना यहाँ गोटे कज एंड दिस इज नॉट फॉर जनरलाइज ट्रीटमेंट थेरापी दिस इज द ओनली आइडेंटिफाइंग दैट कज ऑफ द कैंसर दैट इज जोड़ा कहले प्रोग्राम एनी सेल डेथ आम जोड़ा हुए प्रोग्राम सेल डेथ गोटे जेनेटिक कंट्रोल हो जहाँ भी होची बॉडी रे एनीथिंग जेनेटिक कंट्रोल एपर्यंत यदि देखिए ओवर द इयर्स दे आइडेंटिफाइड ओनली वन कज which is also limited to only 30 patients that is also faulted to 12 patients that is cured. आप गोटे पॉइंट को आम खोजापी एत दिन गला आउ ट्रीटमेंट करने पैसा सापेक्ष आउ दैट इज नॉट जनरलाइज ट्रीटमेंट ऑल्सो से गोटे ड्रग को लेकिन आम सब ट्रीटमेंट को बंद करें कि सब टाइप थेरापी को आम क्वेश्चन करें किंतु यहीटा गोटे होप जे यही थेरापीटा कले जे कैंसर क्योर हो पार गोटे कज को आम टार्गेट कर दिस ए बिग होप
बट साइमल्टेनियसली लिमिटेशन होची जो जोटा हाइप होची डॉक्टर हमर सौम्य कहिला जे दिस इज हाइप डेफिनेटली इट हाइप आमे एबे आ भाबुना हो जे जेतल प्रथम कैंसर भाबुतले कैंसर ना सुनले लोग भाबुतले जे डेथ सेंटेंस तापर से आम भाविलु 2 वर्ष बंची गले बहुत बड़ कथा तापर आम भाविलु 5 वर्ष बंची जीव जदि सेटा को आम क्योर कहथुलो किंतु एबे आसुची 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष जदि 15 वर्ष ऊपर रिजल्ट आमको गोटे क्वेश्चन मार्क दउची 15 इयर्स को सेटा सॉल्व होची जमते हमको कैंसर स्टमक रे कहिबे 10 वर्ष ऊपर डिफरेंट प्रोसीजर ऊपर सो मेनी कंट्रोवर्सी आसिला 15 वर्ष ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी सेटल हला सेति आमे आ ये जो 6 मास 2 वर्ष ऊपर टारगेट रखी कि गोटे कंक्लूजन दबा बहुत अर्ली सेति वी कैन नॉट स्टॉप द अदर थेरापीज कि बंद करि परिबुनी कि एही गोटिए ड्रग को नै कि किंतु डेफिनेटली ई ड्रग टार होप दउची जे आमे वी हैव टू आइडेंटिफाई द कॉज एंड वी हैव टू टारगेट तेरे बड़ सुविधा कौन कि जोटा आगु जेनरलाइज ब्लांकेट ट्रीटमेंट करूले तार साइड इफेक्ट्स रोला मैं नॉर्मल सेल भी मरुले कैंसर सेल सहित ताप साइड इफेक्ट्स बहुत रोला ताकू टॉलरेट करने पेसेंट पैसा भी खर्च होता प्लस धैर्य भी रोना जमी कहे केमोथेरापी बाड़ चलीगला से गोटे बहुत बड़ कनसर्न फॉर लेडीज एबे कोन टारगेट वाला को रही जाउछि आज्ञा आज्ञा डोस्टालिमाब रो साइड इफेक्ट रहइबो ना रहइबोनी नहीं सहीटा नॉर्मली केमोथेरापी भली रहइबोनी डॉक्टर सौम्य विल डू बेटर काइंड दिस इज द वेरी टारगेट आज्ञा डोस्टालिमाब तांकर जो ट्रायल थिले 12टी रोगी ता द्वारा साइड इफेक्ट थिला हालिया लागिवा किंबा पतला झाड़ा हवा आ दुर्बल लागिवा आ किछि लोगों को काश हवा तेणु एवडा तार साइड इफेक्ट थिला किंतु तार सब साइड इफेक्ट जब करावे तार सब ग्रेडिंग करावे ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 ग्रेड 4 तेणु से देखिथिले जो बहुत सीरियस साइड इफेक्ट कारी नथिला ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 किंतु 12टी रोगी भितर हेई नाही माने नाही जे होची अन्य बड़ धारणार ट्रायल कले हबनी तेणु डोस्टालिमाब रो अन्य सेपरी इंजेक्शन गुडी अच्छी जमते कि निभोलुमाब पेम्ब्रोलिजुमाब अन्य औषधटा अच्छी तादेर साइड इफेक्ट थाए पतला झाड़ा हवा स्किन रे रैश हो जावा एवं हालिया लगे सब साइड इफेक्ट थाए तेणु से जो 12टी रोगी नहीं था सीरियस साइड इफेक्ट किसी नाला किंतु ग्रेड 1 और ग्रेड 2 साइड इफेक्ट थिला किंतु आम मन रखा दरकार जैसे फेज 2 ट्रायल ट्रायल जो गोटे औषध आविष्कार हुए सब फेज 1 थाए फेज 1 में डिसाइड हुए केते मिलीग्राम औषध दबा उचित जमी सपोज आम पांटसीढ़ी गोटे बटिया खाऊँ कि सेट्रिजिन गोटे बटिया खाऊँ आम जानते पांटसीढ़ 40 मिलीग्राम खाया दरकार जो आरंभ हुए ट्रायल से जानी ना केते मिलीग्राम दबा उचित से फेज 1 ट्रायल आम कहते जो आम आरंभ करती क्या 160 देदेवे क्या 80 देदेवे तेणु से हिसाब से गोटे डोजिंग गोटे कराए प्रथम फेज रे ये जो ट्रायल थी डोस्टालिमाब ट्रायल फेज 2 ट्रायल फेज 2 ट्रायल आम साइड इफेक्ट देखती आ केते काम कर देखते फेज 2 थिला फेज 3 जो ट्रायल हुए बहुत अधिक परिमाण रोगी नियंती स्टैंडर्ड ऑफ केयर सहित कंपेयर करती जोटा कि सर्जरी और रेडिएशन और कीमोथेरापी से फेज 3 ट्रायल तेणु जो औषध आम व्यवहार करती खाली फेज 2 सांगे सांगे आम क्लिनिक रे रोगी मानक चिकित्सा करा उचित नुह तेणु आम बहुत परिष्कार और क्लीयर वार्डिंग रे ये जो जिनस गुड़िक कराई केवल ट्रायल रे कराई आम जनरल क्लिनिक रे सांगे सांगे ये कर यूज कर आमको आहरी अपेक्षा करा पड़ो बड़ धरण ट्रायल कला मल्टीपल ट्रायल आसीगला व्यवहार करा उचित तेणु कौन से डाक्तर सांगे सांगे आसिक चिकित्सा करेंगे ना आपण मान तो बहुत all are not doctors. Let us just think of everybody has to die. The causes of death, unnatural death. Number 1 is cardiac. Number 2 is actually casualty, accidents. Number 3 is cancer. Number 4 is corona. 4C. First is cardiac, then casualty, cancer and corona. Next you have come to cancer. We are at cancer now, after corona. We are going in the opposite way. Okay. थैंक यू सर अति सुंदर कथा कहले डॉक्टर कर जे सार जमी कहूले जे जो माने कोविड पेसेंट होउचंदी जदि कैंसर जदि होता है आगु ताहले सेमानकर जीवन प्रति गोटे बड़ गोटे विपद रहुछि से देखिए ये जो डिजीजटा ना कैंसर कहते यहाँ हूँ गोटे दोज हु आर इम्यून कंप्रोमाइज्ड है बेलू भाइरस इन्फेक्शन हम कैंसर भी एफेक्ट करे बॉडी को एंड दैट इम्यूनोथेरापी इज कमिंग व्हाट डॉक्टर पंडा इज टेलिंग व्हेन यू आर ऑलरेडी इम्यून कंप्रोमाइज्ड
द बोथ डिजीज एफेक्ट्स देन इट इज ऑब्वियस समस्त को जना पड़ जे डिजीजर भयावहता केते हबो आम देखीचु जो कोरोना समय एम्स रे कौन एवरीवेयर बंद करदे इवन TMH बंद करदेला टाटा मेमोरियल बंद करदेला एम्स बंद करदेला किंतु मु बंद कर नथिली कहीं ना मु जानी कि तार जो ऑपरेशन करवाटा कि ट्रीटमेंट करवाटा मु सेतले सपेक्ष नथिली कि कैंसर ट्रीटमेंटा बंद करा जाओ कहीं जदि स्टाटिस्टिक्स नॉर्मली लोक जना ना एंड मीडिया भाई मन को भी मु कहूची जे कैंसर केबे गोटे इश्यू है कि आसीनी क्या कहीं ये इवोल्यूशनरी डिजीज प्रोसेस किंतु कोरोना थिला रिवोल्यूशनरी माने जब से कोरोना डेथ जेति थिला सही समय कैंसर डेथ ताठू बहुत अधिका थिला किंतु केबे हाईलाइट ही नथिला से कौन जो कैंसर सहित कोरोना हैला सेते बेले द पेशेंट रो मोर्टालिटी बहुत अधिका थिला से जो दीटा जाक डिजीज एट ए टाइम तार मोर्टालिटी बहुत अधिका आम भी करूँ जोटा कि सब क्लिनिकल स्टेज जोटा कहूँ कि कोरोना जना पड़ू नाला आम ऑपरेशन करूँ तार मॉर्बिडिटी इवन मोर्टालिटी होने दे आर बाय जो रेजिस्टेंस एत कमी जाइला से माने एक तो पेशेंट जोटा स्ट्रेस टू रिकवर फ्रॉम द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड इट गोज डाउन से सब बेले कोरोना सहित यदि कैंसर आसला डेफिनेटली मोर्टालिटी अधिका निश्चय अधिका रहबो निश्चित अधिका से आम गोटे डिजीज को आगे कोरोना कहीं यहाँ एक्यूट थिला ताकू ट्रीटमेंट करूँ आ 6 वीक्स गैप देके कैंसर ट्रीटमेंट करूँ कहीं से समय गोटे इम्यूनिटीटा रिकवरी है आम आ गए मेजर स्ट्रेस दौलू साइमल्टेनियसली कोरोना समय ऑपरेशन थ्रू आउट वर्ल्ड बंद थिला एइथिपाई कि मोर्टालिटी बहुत अधिका जो कोरोना पेशेंट रे माने कैंसर पेशेंट कोरोना थिला आमे ताकू स्टॉप करथुल कैंसर ट्रीटमेंट फर्स्ट ट्रीटमेंट करथुल 3 वीक्स आइसोलेशन रिकवर फ्रॉम द कोरोना देन 6 वीक्स पीरियड आइसोलेशन तक रिकवरी करिया पे जोटा आमे प्री हेबिलिटेशन कहूछु त प्रिपेयर करता तापर आमे ऑपरेशन करथुल इथु जानि पारथु जे केतिकी भयावह जदि साइमल्टेनियसली दीटा डिजीज रहउची एंड आल्सो कोरोना समय रे आम देखी जो बहुत लंग कैंसर पेशेंट्स नेग्लेक्टेड होती बिकज एवरीवन थिंकिंग लाइक सीटी स्कैन कर दियो आसले से लंग्स रे कोरोना अच्छी कोरोना ट्रीटमेंट चलला लेटर ऑन दे डिले है लंग्स कैंसर ट्रीटमेंट एंड मोर्टालिटी आल्सो डिलेड जस्ट का एग्जांपल से बहुत जिनस अच्छी सेमती आज्ञा आज्ञा धन्यवाद सर 25 वर्ष तले जोड़ा बाहर थिला प्रिवेंटिव जो मेडिसिन सेटा काहे बंद हो गला बोली आपण भाबुचंती ना नहीं सेटा मैजिक बुलेट इन कैंसर एक monoclonal antibodies he talks on that you can just add up सी सेटा जो क्वेश्चन पचारे रथ 25 वर्ष पर जोटा मैजिक बुलेट बाहर आपन गो बैक टू द जोटा आपन को कहते ना आप पछू देखिए कज ऑफ द कैंसर जदि जानी पारिबे ताले एई क्वेश्चन आंसरटा बहुत इजी हबो देखो इवन फिजिक्स रे जदि आप फिजिक्स स्टूडेंट थे कि ये थे जानी थे देयर इज ए नेटवर्क सिस्टम व्हिच इज वेरी प्रेडिक्टेबल द सेम थिंग इन आमर बॉडी रे सब गुड़ा गोटे नेटवर्क रे चले एंड पाथवे आम कहूँ बायोलॉजिकल पाथवे जदि गोटे पाथ मान ये जदि यही सेल मैच्यूरेशन यही स्टेज रे जीव गोटे लाइन ले जीव एटा है से जीव तार डिफरेंट रिसेप्टर्स देखिए आम ये न्यूट्रिशनटा नेला माने बॉडी रे काम करियो गोटे रिसेप्टर बेसिस रे काम करिवो ता सब डिफरेंट पाथवे अच्छे जदि आम गोटे पाथवे को ब्लॉक करूचु कैंसर सेल्स सो टैलेंटेड लाइक जस्ट टेररिस्ट इवन आप गोटे रास्ता बंद कर से आउ गोटे रास्ता बाहर कर कैंसर सेल सेमती आउ गोटे पाथवे बाहर करदे जोटा कि कैंसर बढ़ापी से जो बाहर जो फास्ट टाइम आम आइडेंटिफाई कले यही पाथवेटा कैंसर करुच्ची ब्लॉक कराला से सार जोड़ा कहते मैजिक बुलेट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आसला से इट वाज ए वेरी बिग होप कि आम कैंसर ठीक करदेबू मुझे MD एंडरसन जाइए जीन थेरापी कहले से the surgeon who got the biggest grant in the world to do this gene therapy तापर गोटे बिल्डिंग भी होइछि सेठी लेखा होइछि gene therapy within 2-3 years this failed because से gene therapy को नबा पाई मान जोटा आम वेक्टर को ताको नै कि सेल पाखरे पहुँचला मारिया पाई ओलको तार चेंज हो जाइछि सेल माने लेमन टावर में कहूछि जोटी आम यूठू को सपोज गोटे पुलिस नहीं कि जाई पहुँचला वो टेररिस्ट पाखरे टेररिस्ट ऑलरेडी चेंज कि गोटे चला से सेम थिंग से
monoclonal antibody जोटा magic bullet टा fail हैला then coming now this is the immune checkpoints जोटा कि immunotherapy आसेला सेति the cause जोटा cancer रो cause को आमे जानिया को चाहूचु प्रतिटी स्टेप रे आमे नुआ नुआ जिंस पाउचु सेति जेतले आपण कहबे स्टेज 4 रे आमे लंग कैंसर केबे जानि नथुलु बंचिबा आमे सेतले सर्वाइवल आमे काउंट करू नथुलु नाउ 10 इयर्स बंचिलेनी सेतले 0 थिला एबे 25% हेलानी आमर जेतले जानिबाटा कैंसर उपरे सेतिकी स्पेसिफिक हेई जाउची आमे टार्गेट सेमति स्पेसिफिक होउची सेति पय आपण जोडा कहले कि मैजिक बुलेट व्हाई इट फेल्ड बिकॉज आवर कॉज ऑफ द डिजीज हैज आल्सो चेंजिंग and our target also differing. One point stopped, another pathway developed. That is the cause why the one drug failed, again we are going next. So एटा भी गोटे होप आमे कैंसर टा बंद करछु हेई पारे आमे आउ 5 वर्ष पर हेइथिबो एई पाथवे न आउ गोटे पाथवे डेवलप करी कैंसर करूची सेथि जीवन शैलीटा बहुत इंपोर्टेंट come back to that condition जीवन शैली the number 1 cancer in India is oral cancer. The cause is tobacco. And do you know this cancer doesn't spread to distant places. So you go, the people suffer in such a way. Tobacco, there should be any other country, they would have declared no tobacco. Singapore, there are countries. You cannot go, if any Indian goes, they will try to see everything if there is tobacco, BD cigarette or not. And oral cancer doesn't spread to distant places. Lungs, liver, bone, brain. These are the places where cancer spreads. Oral cancer goes on eating only the mouth cavity. One small one we operate. He is cured. But at times patients come. You see, we know that the number 1 cancer in India is oral cancer and cause is tobacco. And this cancer doesn't spread to distant places. Still then, we are not able to control. Our government is not able to. Do you know why? The return from tobacco is highest for government machinery. एते पैसा मिलुची बिक्री होइकरी ता बिना सरकार चली पारिबनी आमे कहि पारिबु डाक्टर लोक सो नंबर 1 कैंसर इज ओरल कैंसर and it doesn't spread to distant places by blood. Still then we are not able to control. And you can spend for 1 dose for this magic drug 1.4 crores. So anyway, let the idea go. We can, no tobacco, no oral cancer. If this much spreads, 1/3 of patients of cancer patients of India will go down. Thank you. Sorry, because we are not sitting here to know the researches. You will forget by the time you go out of the hall. Let us know something which is needed for everybody, every futures or anybody. You can, if you are not taking, you can tell who is taking. And in smoking, if the husband smokes 3 cigarettes in a room, it is for the wife, it is equal to smoke 1 cigarette. For that only in the airports, there are smoking rooms. That, sorry. ନାଇଁ ସାର୍ ଆପଣ ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଚେତନ ତାର ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଯେ ଆମେ ଯଦି ଗୁଟକା ତମାଖୁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁ ମୁଖ ଗହ୍ୱର କର୍କଟ ଯାହାକୁ କୁହାହେଉଛି ଓରାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ସେଇଟା ନମ୍ବର 1 ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଯାହା କହିଲେ କର ସାର୍ ଯେ ଜୀବନଶୈଳୀ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ଦିଗରେ ଡକ୍ଟର ପଣ୍ଡା ଯେ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ କମ୍ ଆମ ଗହଣରେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼ାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଗରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଆମେ ସାରିବା ଯେ ୟାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଆଶା କରିବା ନା କରିପାରିବାନି
ट्राक ट्रिटमेंट जो कथाटा सर आपण जोटा कहउतले नहीं आशा तो सदाबले रहियो डाक्तर उपरे आशा औषध रे आशा किए बंचिया को चाहुनी जेते नुआ औषध बाहरु जेते दाम हो जार कैंसर है लोक मैंने जो आड़े जापरे कहार पैसा अच्छी से चलला टाटा मेमोरियल धर आम टाटा मेमोरियल 1976 मसीह चलू अमेरिका दीदी थर मेमोरियल प्लान कटरिंग सबुआड़े देखीचु वर्ल्ड ट्रीटमेंट हैज बिकम very common nowadays. It's nothing new outside. Everything is being done everywhere. You can how best you can do with all the drugs available, with the methods available, with the equipment. But my same first request: no tobacco in any form. That is the first weapon to win cancer in India. No tobacco. Oral cancer number 1. Please, no tobacco. That is number 1. Then if you have got cancer, you take all the treatment available with your economy, with the help of others, whatever you want. They don't die quickly. Yes. मिस्टर रथ जोटा पचारे ना देयर इज ए होप अपन देखिए जो मुझे कहली स्टेज 4 कैंसर आमे जो पढ़ुलु जीरो मोर्टाल मैं सर्वाइवल नाउ दिस इज लाइक 25% इन स्टेज 4 से यही जो ड्रगटा आसला देयर इज ए बिग होप दिस मे बी लिमिटेड ट्रायल बट आफ्टर अपन जब कहे समस्त जानी जीनोम प्रोजेक्ट जोटा है कि आम बॉडीर सब जीन गुड़ाक एनकोड कर प्रति जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस आसूची सबुठी गोटे गोटे रिलेटेड टू द जीन आसूची आमर जिते यहीटा गोटे होप देला कि आमे जदि कस्टा जानूचु आमे ताकू ठीक करि परिबु हेई पारे बहुत कॉस्टली आज यूज हम सपोर्ट कर इंश्योरेंस कंपनी की गवर्नमेंट सपोर्ट करियो वी कैन क्योर लाइक जदि सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन आसिला से ग्राजुअली यहाँ को आम इंडियन गवर्नमेंट एवं डिसाइड करुच्ची कि जोड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम रे ने इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम रे नहीं गला पर सर्वाइकल कैंसर में डाउन बोलना ठीक एंड सेकंड थिंग इज vaccinated for cancer service. सेमती यही जो ड्रगटा आसिला ये जो ड्रगटा आसिला दैट कॉज देयर इज ए होप दैट वी कैन बीट द कैंसर मीन्स दिस इफ यू आइडेंटिफाई द कॉज पर्टिकुलरली देन विल टारगेट बट सही पारे से ड्रग गोटे डेभलप करिया एनी ड्रग गोटे ड्रग डेभलप करिया एते इजी न हो कि एते कम पैसा भी न बहुत पैसा खर्च हुए ताकू से करिया में बहुत कॉस्ट सर मु जहा देखुतली गोटे डोज पाखा पाखी 8 लाख ऊपर रहउची बेसी बेसी 6 आज्ञा टोटल ट्रीटमेंट इंडियन करेंसी रे 66 लाख टू 1.2 करोड़ आज्ञा आज्ञा डोज सेथि पय किंतु कॉस्ट आज अछि सेटा गोटे होप कि आमे करि परिबा जार पैसा अछि से भी नथिला ता पय होप जापार पैसा अच्छे से भी करी पारिबो ना दैट इज द मेन थिंग देयर इज द होप ऑलवेज दैट्स वी आर डेवलपिंग एंड वी आर ग्रेजुअली कंकरिंग बट मेन थिंग आम बॉडी थिबा माने डिजीज रहिबो है शरीर बॉडी अच्छी माने जदि आगे निजु को देखंतु आमे जतले पढुथुलु सेतले कहथले वन्स माने यू हैव बोर्न मींस देयर विल कैंसर और नियोप्लासिया and if you want to cure then only the death will cure the cancer type things that's why they but that doesn't mean कि we will not control this drug is a big hope. Thank you sir. So आमर सेमती सब भूल धारणा रहा कथा नुह जे जोड़ा नुआ आविष्कार होची that will always be very costly तेणु that is very important जे सब जे it will be costly तार गोटे पेटेंट पीरियड थाए आफ्टर दैट इंडियन जेनेरिक्स आसिकी ताको कॉस्ट कमी दियंती तो एट दि मोमेंट हाँ कॉस्टली अच्छी तार सॉल्यूशन भी ऑलरेडी इंडिया रे तार लो डोज इम्यूनोथेरापी यूज कराउची जेहेतु समस्ते पारुना कि पारुना तेणु इवेन टाटा मेमोरियल बॉम्बे हो कि किसी सेंटर हो जोटा कि कम डोज देकी भी लोक मान समान इफेक्ट पाँच तेणु दैट इज ए वेरी इंपोर्टाट मेसेज धर जन को 500 मिलीग्राम बदलले सपोज 100 मिलीग्राम भी समान इफेक्ट मिलूची देन डेफिनेटली 500 मिलीग्राम बदले 100 मिलीग्राम किणी पार्टी लोक तेणु फॉर द टाइम बिंग आम धर प्रमाण कर हाँ लो डोज इम्यूनोथेरापी कि कम डोज रे कम खर्च हो जाऊँगी देन आई थिंक दैट इज ए वेरी गुड माने इम्प्रूवमेंट सेकेंड हूँ इवन विथ IIT मुंबई TMS मुंबई कोलाबरेट करके सिमिलरली IIT मद्रास एंड कैंसर इंस्टीट्यूट अड़यार चेन्नई कोलाबरेट करके इंडियन इनोवेशन कि कार टी सेल्स जोड़ा कहते कि नुआ
पद्धति चिकित्सा गुड़ा से माने मिसिकी एबे वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट जे माने लो कॉस्ट रे कम खर्च रे केमतिका समान औषध तैयारी करके आमे वर्ल्ड को प्रोवाइड कर पाइबा तो आई थिंक दैट वी आर इन द राइट डायरेक्शन लो डोज कम परिमाण दे कि कम खर्च करके समान इफेक्ट पाइबा सेकेंड होची इंडियन एजेंसीज आसिकी कोलाबरेट करके आम निजर आम आविष्कार करके ट्रीटमेंट करवा आई थिंक वी आर इन द राइट डायरेक्शन थैंक यू सो मच सर आमर द्वितीय सत्र अधिवेशन को ये सारिबा मु निश्चय डॉक्टर कृपा सिंधु पंडा सर तांकर गोटे राइटअप अच्छी लेखा अच्छी मो पाखरे भी गोटे अच्छी कैंसर केयर टू क्योर समस्त को परे आज्ञा आज्ञा मु धन्यवाद दूची पंडा सर को मु धन्यवाद दूची माधवानंद कर सर को मु धन्यवाद दूची सौम्य सुरत पंडा सर को कार्यक्रम को द्वितीय सत्र को ये सारिबा आम अति अल्प समय भितर अनेक किछि गुरुत्वपूर्ण कथा एवं सूचना कर्कट रोगर निदान उपचार एवं उपशम बाबद जाना पाइली मु वर्तमान कार्यक्रम को आगु नापी मैडम मिश्र को अनुरोध करुँची थैंक यू check thank you very much sir आम समस्त पैनलिस्ट एवं मॉडरेटर को बहुत बहुत धन्यवाद फॉर दिस रियली इनसाइटफुल सेशन मु अनुरोध करी संदीप सर को एवं पुण्या मैडम को प्लीज स्टेज ऊपर को आसबे वी वुड लाइक टू फेलिसिटेट आवर पैनलिस्ट्स एंड आवर मॉडरेटर I would request Sandeep sir and Punya madam to kindly felicitate a panelist Dr. Krupa Sindhu Panda sir. Thank you very much. Anurod Koribi sir or madam to kindly felicitate Dr. Madhavananda Karaji. Thank you very much. I would request Sandeep sir and Punya madam to kindly felicitate Dr. Soumya Surat Pandaji. And yes, I would request dignitaries to kindly felicitate the moderator of the session, Shri Balabhadra Ratha. गोटे जोरदार तालीटिए दबा बहुत मांदे गले धिमे गले बहुत सीरियस डिस्कशन हो गला तो चिंतार विषय पड़ी जाइछन्ति सेमति लागुची सो विथ दैट I thank our panelists and our moderator of the second session. Cancer is beatable, the dostarlimab hope. Thank you so much, Sandeep sir and Punya sir for doing, Punya madam for doing the honor. And with that, samay kam achi tenukari turanta ame valedictory session aduku jiba. And Darsok Bandhu, ladies and gentlemen, it gives me immense pleasure that for our valedictory session, as the chief guest, we have amongst us Shri Priti Ranjan Gadeji, Honorable Minister of Rural Development, Skill Development and Technical Education, Government of Odisha. Sir को बहुत स्वागत एवं आपण समस्त को अनुरोध करी मो संगे सहयोग देबे गोटे जोरदार ताली देकी सर को आज एई मंच को आमे स्वागत करबा श्री घड़ई आपण समस्त जानिचंती द एमिनेंट लीडर प्रफुल्ल चंद्र घड़ईकर सुपुत्र एवं वर्तमान he is one of the most youthful and dynamic leaders of the state. He represents Sukinda Assembly constituency. Ebong Bartaman, he is shouldering the responsibility of Minister of State, Independent Charge, Skill Development, Rural Development and Technical Education, Government of Odisha. Ladies and gentlemen, as the guest of honor for the valedictory session, we have the privilege of the presence of Madam Nilanjana Mukherjee, Vice President and Unit Head of Amri Hospitals Limited in Bhubaneswar. Ms. Mukherjee started her career in hotel industry with Taj Group of Hotels. She has also worked with groups like Apollo and Columbia Asia, apart from Amri in different areas and location. She is currently the Unit Head at Amri Hospitals, which she joined in 2015 as General Manager and has been instrumental in its growth from 30 beds to 400 beds hospital. Madam, a very good afternoon and welcome to the valedictory session. And now, अनुरोध करी और पुणी थे मंच उपरको स्वागत करी टू आर ग्रुप एडिटर ऑफ ओडिशा बाइट्स एंड ओडिशा संवाद श्री संदीप मिश्रा जी एवं स्वागत करने चाहिए एडिटर ऑफ ओडिशा बाइट्स मिस पुण्या प्रभा रथ मैडम को.
So, ladies and gentlemen, the dais is all set for the valedictory session. And ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଆମ ଗେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅନର ନିରଞ୍ଜନା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଆଜିର ଏଇ ସଭାକୁ ଆଜିର ଏଇ ସୁଶ୍ରୁତ ଦ ହେଲ୍ଥ କନକ୍ଲେଭର valedictory sessionକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା. Thank you so much, and without further ado, I would request Ms. Nilanjana Mukherjee madam to address us, please, ma'am. Now ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ଦେଇକିରି ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ. Thank you very much. My regards to the Honorable Minister, my regards to all my seniors, very, very eminent doctors. My special thanks to Sandeep Mishra ji for organizing this event. So I have been listening the entire conclave, but I would like to start as a hospital administrator. And to begin, I would like to share a small incident which happened to me during the COVID. So there was this patient who got admitted at the age of 75. His son was a very eminent personality and also a very highly placed officer in one of the PSUs. And he was brought to our hospital quite a critical stage. And when we asked his son to come and fill the consent form, his son refused to even come into the hospital to fill the consent form because his father was detected with COVID. Eventually, this gentleman, he succumbed to after 15 days. And then I got a call. And during this entire period, I got calls from very, very senior people of the government, of the different PSUs, that this patient should be taken care. After 15 days, when this old man succumbed, his son called me to say that, Madam, don't you have any services where my father can be sent for funeral? Because my family, my wife, my children don't want me to go and do the last rites of my father. Now, the story why I want to start with you, sir, is that in that phase, do you even realize how much day in and day out the Odisha government, the BMC, the people have come and taken bodies after bodies, cremated them, and given them a dignified farewell. So this is how our government actually supported us silently, and we never realized it. We realized as administrators when I used to just text the Honorable Health Minister, and I am saying WhatsApp that, sir, we don't have the supply of Remdesivir. There used to be an instant reply, Madam, this is how you are going to get it. I didn't have to go to any senior bureaucrat or anybody to get access to the government. So as an administrator, I thank the government, and I have worked in other states that way Odisha has worked with the private hospital or government hospital or be it any hospital. I would really appreciate and a commendable care. Now bringing it back to that, today when we are standing here, do you realize the strength of the digital media? Today, when we have a BSKY patient, like our Honorable Minister said that BSKY is our Honorable Chief Minister's dream. If a BSKY patient is not treated properly, he or she just has to tweet in the social media or send a note and it goes to the SAME's office. So what happens with that is, there are two ways to it. Sometimes some people say, yes, everybody has an access. But you know, it is very important to be accountable for the services you're given. And accountability is going to bring in quality. We are talking about affordable healthcare. Affordable healthcare is in India's motto, our Honorable Prime Minister's motto, our Chief Minister's motto. But do you think affordable healthcare has to be also thought with quality healthcare? So in my talk today in the conclave, and a very, very strong suggestion to our Honorable Minister who's come as the chief guest today, is that quality healthcare where government is spending so much of money on healthcare, and government is actually going leaps and bounds to bring in good healthcare in the state. Why can't we also follow other states who are getting into government hospital accreditations,
They are getting into quality certifications and accreditations. A lot of hospitals in Kerala, a lot of hospitals in Gujarat have done that. With what is going to happen is a better accountability of what has been spent by the government, accountability of the processes, documentations, and services which we can give to the patients. So my first suggestion would be to the government that if you can bring in a little more quality towards the government setups. And the second part would be that affordability does not limit to just the patient's affordability. Affordability also depends on the investor's affordability. So today, to run a hospital, we need about 63 licenses. We need huge infrastructure cost, and only for running a statutory and legal compliances, we have a lot of expenditure. So another suggestion and another request to the government that let us help good investments, healthcare investments in this country, in this state. Let us make it easy for the investors to come and invest in healthcare. Today, the bed rent about 5,000, above 5,000 is plus GST. Yes, there are a lot of expenditure the government is doing, but who will invest if you do not give that leverage? So as healthcare is a social responsibility for the state, I would also request that if government can look into a better investors, help the investors to invest good infrastructure in the state. So with that, I conclude my session, and I would like to really appreciate that Odisha Bytes has taken up a very, very good topic, a very sensitive topic, because in our industry, we do not have any shortcuts. The doctors cannot say that, oh, I forgot to do this. So it's a very sensitive industry. There are a lot of stories behind, but thanks, Sandeep ji, that you have taken up this industry and this topic today. So thank you very much. Namaskar. Thank you very much, madam, for that crisp address, but addressing exactly to some of the key concerns in the health sector in the entire industry. So thank you very much for that address, madam. And now aguku badhiba ebong bartaman mu anurodh karibi ajira amar ei valedictory session ro je mukhya अतिथि माननीय मंत्री श्री प्रीति रंजन घड़ई महोदय को से हमको address करिबे. So please गोटे जोरदार ताली देके सर को हमें स्वागत करिबा. Thank you. आज कार्यक्रम स्रष्टा ओडिशा बाइट्स एवं ओडिशा संवाद मुख्य श्री संदीप मिश्र महोदय, जहाँ को दीर्घ वर्ष धरी आम देखुचु सी जड़े भल पॉलिटिकल जर्नलिस्ट आउ तांकर स्पोर्ट्स उपरे भी मध्य बहुत अधिक नॉलेज तांकर अछि. राज्य रे अनेक लोक तांकर परामर्श नियंती. निश्चिंत भाव में आपण मैंने भी बसी भावुए सी तो निश्चिंत किसी पॉलिटिकल कनक्लेव करि पारथांते ना स्पोर्ट्स उपरे करि पारथांते, किंतु से टॉपिक टी को नेले हेल्थ उपरे कनक्लेव को अरेंज कले कना दिस इज द नीड ऑफ द आवर. धन्यवाद जणे भी संदीप भाई की गोटे हेल्थ सब्जेक्ट जोटा कि समस्त को वर्तमान पई कंसर्न रही स्टेट पई विशेष करी आम पई समस्त पई ओडिशा बाइट्स ओडिशा संवाद मुख्य संदीप भाई की से बहुत बहुत धन्यवाद जनाऊँगी. निजर एक्सपर्टाइज निजर एक्सपीरियंस जर्नलिज्म क्षेत्र में पॉलिटिकल फील्ड रे स्पोर्ट्स क्षेत्र रखी बर्तमान हेल्थ सेक्टर रे जेभली भाव रे निजकू सामिल करिसेंती. प्रथम थर एभली भाव रे गोटे कनक्लेव आयोजन करिसेंती. नीलंजना मुखर्जी रही पुण्यप्रभा रथ आगे समस्त रिनाउंड डॉक्टर्स हेल्थ एक्सपर्ट्स उपस्थित रही सांबादिक बंधु माने. तो पैनल डिस्कशन सरी अनेक भल कथा रखी आपण माने. मु भी लाइव शो रे देखुली आपण मान डिस्कशन शुणुली. जेते कहले जेते प्रशंसा कले भी डॉक्टर्स कम्युनिटी पई कम पड़ी जीवो. गोटे जर्नल रे देखुली यूएस रे जो डेवलप्ड कंट्री सबुठू वेल्दी कंट्री 7%
ता भितर गोटे पेसेंट निश्चिंत भाव में तांकर डॉक्टर भारतीय एते वेल्दी कंट्री डेवलप्ड कंट्री तो दिस इज वेयर आवर डॉक्टर स्टैंड टुडे। आज मोर निर्वाचन मंडली सुकिंदार जदि नगड़ा कथा शुणी थे सेठी भी आपण मानकर अवदान रही। आज यूएस रे भी मध्य आपण मानकर सेठी पेशेंट्स ट्रीटमेंट रे आपण मानकर सेतिरे योगदान रही। नगड़ा ठू नहीं कि यूएस पर्यंत ये भारतीय डॉक्टर्स मानकर सबु जगह प्रेजेंस रही। आपण मानक एक्सपर्टाइज एक्सपीरियंस को आपण माने सबु क्षेत्र रे नियोजित करिसंती। ये गोटे सौभाग्य। आसंता काली विश्वविख्यात घोष यात्रा समस्ते अनै बसिचंती प्रभु जगन्नाथ को रथ उपरे देखिबा पई। आसंता काली भी मध्य डॉक्टर्स डे। ये मोर सौभाग्य। ये भगवान कर चलंती प्रतिमा आपण माने डॉक्टर्स माने आपण मानक भितर गहन रे आज उपस्थित निजको रखी पारिछि। ये मोर सौभाग्य। कोरोना समय रे जेते धन्यवाद देले भी कम पड़ी जीवो। आज यदि 2 वर्ष आपण माने आज परिश्रम करी न थांते आज बोधे कार्यक्रम भी आज कॉन्क्लेव हेटी आमे करि पारि न थांतु। अनेक डॉक्टर्स आपणकर मेडिकल आपणकर हेल्थ फ्रेटर्निटी रे अनेक लोक मानकर जीवन जाईछि। समस्तंकु तांकर अमर आत्मार सद्गति निमंते प्रभु निकट प्रार्थना करुच्ची। सैक्रिफाइस आपण गोटे इनविजिबल एनिमी सांगरे लड़ई आपण माने जारी रखिचंती। यू आर द फ्रंट वॉरियर्स। किछि एक्सपीरियंस मु जोठी देखिछि खाली एट आपण माने तो समस्त रिनाउंड डॉक्टर्स बसिचंती एठी आपण माने समस्तंकर गोटे लक्ष्य नहीं कि बसिचंती। संदीप मिश्र भी जो कॉन्क्लेव टिके आयोजन करिचंती तांकर लक्ष्य भी मध्य रहिछि राज्य एवं देश रे किबड़ी भाव रे क्वालिटी हेल्थ केयर आमे समस्त जनसाधारण पाखरे पहुँचे पारिबा टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ द पुअर नीडी समस्त को किबड़ी भाव रे सुरक्षित रखि पारिबा। जो थिरे आज माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक आज विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना रे स्मार्ट कार्ड दे आज सुरक्षित रखिचंती प्रत्येक व्यक्ति की। 20 वर्ष तले 3टी सरकारी मेडिकल कॉलेज आज 8टी मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट रो 3टी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आसंता वर्ष पुणी 3टी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खोलिबा को जाउची। तो रोबस्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आसीबा को जाउची। शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स देखा दब नाही। सबु जगह भी आपण माने देखुथिबे प्राइवेट हॉस्पिटल हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो सबु जगह रे इंफ्रास्ट्रक्चर रे जेबळी भाव रे वर्तमान प्रायोरिटी रखा जाइछि। आसंता वर्ष रे निश्चिंत भाव रे समस्त जनसाधारण को आमे एफोर्डेबल और क्वालिटी हेल्थ केयर पहुँचे पारिबा। मोर खाली किछिटा अनुभूति मु देखे जोटी मु भी गोटे पेसेंट है कि जेते बेले अनेक जगह आमे भी लोक मानक पाखरे पहुँची थाउ गोटे कोर क्लिनिकल प्रैक्टिस स्किल जोटा कोर क्लिनिकल स्किल आगुरु आमे भी पिला बेले जेते बेले डाक्तर पाखरे जाई बसु से 15 मिनिट हो 20 मिनिट हो अध घंटे हो आम कथा को शुणती आमर इतिहास को शुणती कौन है ये जो गोटे पेसेंटर हिस्ट्री पेसेंट और डॉक्टर भितर जो ट्रस्ट जो डेवलप करे जो गोटे जो फैमिली रिलेशनशिप डेवलप करी जाए। मु भी आज भी मन अच्छे छुआ बेले जो डाक्तर मान सागर मु ट्रीटमेंट करूली आज पर्यंत से संपर्क को डाक्तर पेसेंटर संपर्क नहीं सी जो आत्मीयता जो बॉन्डिंग जो डेवलप करी जाए पेसेंट जिते बड़े निजर हिस्ट्री जिते बड़े कही था गोटे डॉक्टर पाखे कहीं सेते बड़े जो भाव में गोटे गुड लिसनर भाव में जिते मोर हिस्ट्री की जेकोसी पेसेंट शुणी था आगुरी अनेक जगार सीटी डॉक्टर माने भी से रोग को भी कौटी ना कौटी डायग्नोस करि पारंती कौटी समस्या रही कहीं एबे एते मॉडर्न टेक्नोलॉजी उपरे डिपेंडेंट हो गले एंटायर सिस्टम बर्तमान मेडिकल सिस्टम निहाती आवश्यकता रही मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अडॉप्ट करने को पड़ो। इज अ टेक्नोलॉजी ड्रिवेन वर्ल्ड एटी को आम इग्नोर करिपारिबा नहीं जेते जण आम बसिचंती एक्जाक्टली आम समस्ते आज समस्ते वे विटनेसिंग आम समस्ते टेक्नोलॉजी ड्रिवेन मेडिकल भी मध्य आज के दिन मेडिकल साइंस भी टोटली टेक्नोलॉजी ड्रिवेन ताको आम इग्नोर करिपारिबा नहीं किंतु ये गोटे बड़ चैलेंज ये समयर आवश्यकता एंटायर वर्ल्ड वर्तमान से दिग को आपण मानकर समस्तंकर अनेक एक्सपीरियंस रही से कोर क्लिनिकल स्किल को जिते जल्दी आम पुणी कहीं ये समयर अव्यवस्था मु टाणी नहीं कौटी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्टेज हो
कोठी पेशेंट्स मानकर अधिक रु अधिक पेशेंट्स इनफ्लो रोचंती तो डॉक्टर्स माने कोठी ना कोठी आ समय पाई पारु नाहंती पेशेंट मानकर हिस्ट्री को सुनिबा पाई समय दबा पाई अधिक जगार जोठी कि आपण माने तो एक्सपर्ट्स माने अनेक मेडिकल साइंस मेडिकल रिसर्च इनोवेशन प्रत्येक दिन मेडिकल ऊपर सिस्टम ऊपर मेडिसिन ऊपर टेक्नोलोजी ऊपर इनोवेशंस चली तापर भीतर को जीवा चाहू ना किंतु डॉक्टर रो जो प्रथम कार्यक्रम आम समस्त भितर रही डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप को आमे से बॉन्डिंग को जेते अधिक अधिक बढ़ई पारिबा निश्चिंत भाव में जो दिगरे जो लक्ष्य नहीं कि कॉन्क्लेव आरंभ होईची क्वालिटी हेल्थ केयर पॉसिबल हो पारिबो निश्चिंत भाव में खाली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करदेले हब नाही पेशेंट्स को जेते बेले आमे पेशेंस रखिकी धैर्यर सहित ता परिवार लोकों खाली पेशेंट नो ता परिवार लोकर कथा को सुनिबा को पड़िबो प्रॉपर डायग्नोसिस आमे करि परिबा निश्चिंत भाव में जो लक्ष्य नहीं कि बसीचंती टेक्नोलोजी के व्यवहार करूचंती निश्चिंत भाव में जो लक्ष्य नहीं क्वालिटी हेल्थ केयर एफोर्डेबल हेल्थ केयर समस्ते से लक्ष्य रे पहुँचवा आज पुणी थे समस्त को आज धन्यवाद जनाऊँगी आज एभली गोटे हेल्थ कॉन्क्लेव आयोजन करिसेंती पुणी थे निवेदन करी संदीप भाई टी समस्ते करताली दे धन्यवाद जनइबा एकजुट करिसेंती आज समस्त को गोटे महान उद्देश्य नहीं कि जो आज माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक आज 4.5 कोटी 90 लाख लोक राज्य रे सुरक्षित रहिबे सुरक्षा कवच देइचंती आज स्मार्ट कार्ड नहीं कि आउरी भी मध्य तार नेक्स्ट लेवल इम्प्रूवमेंट आणुचंती निश्चिंत भाव में खाली कार्ड दे कि ट्रीटमेंट कर दे कि बाहर देले हब नाही तांको किभली भाव में से माने डिसेंट लाइफस्टाइल मेंटेन करिवे खाली फिजिकल हेल्थ नो मेंटल हेल्थ को भी आमे किभली भाव में तांको रखी पारिबा ठीक व्यवस्था रे से दिगरे कार्यक्रम को आगे नबाक पड़िबा आशा रखुची ओडिशा मो मेडिकल टूरिज्म कहवा ठीक हब नाही आशा भरोसा विश्वास रही ओडिशा समस्त एठिकार मेडिकल फैसिलिटीज उपरे बाहर राज्य अनेक पेशेंट्स आसिकी ए अंचल रे ट्रीटमेंट नहीं जाउचंती ये आपण मानकु सेति समस्त को धन्यवाद जनाऊँगी कहीं आपण मानकर डॉक्टर्स हेल्थ एक्सपर्ट्स आपण मानक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भरोसा रही तो समस्त को आज पुणी थे धन्यवाद जन वक्तव्य शेष करुच्ची वंदे उत्कल जननी। बहुत बहुत धन्यवाद सर ओडिशा बाइट और ओडिशा संवाद रो जो प्रचेष्टा रे आपण सामिल होइचंती आपनकर शुभेच्छा देइचंती आपनकर उपस्थिति आम पई बहुत एनकरेजिंग सो थैंक यू सो मच सर फॉर दोज वंडरफुल वर्ड्स एंड फॉर योर प्रेजेंस एंड नाउ फॉर द कंक्लूडिंग रिमार्क्स मो अनुरोध करिबी श्री संदीप मिश्रा को टू प्लीज कम फॉरवर्ड सर। धन्यवाद मानसी समस्त को नमस्कार मान्यवर मंत्री श्री प्रीतिरंजन घड़ई महोदय मैडम नीलांजना मुखर्जी मो कॉलीग मैडम पुण्यप्रभा रथ समस्ते आज धैर्य सहित आम गोटे बहुत सेंसिटिव आउ बहुत क्रिटिकल टॉपिक्स उपरे आम पैनल डिस्कशन है आमर इनागुरल सेशन रे स्वास्थ्य मंत्री उपस्थित थिले आमर रिनाउंड डॉक्टर सुब्रत जेना उपस्थित थिले आमर सम अल्टीमेट मेडिकेयर सीईओ मैडम श्वेत पद्मा दास उपस्थित थिले बहुत चमत्कार आलोचना है आमर दुईटा जाक पैनल डिस्कशन रे डॉक्टर नीरज मिश्र डॉक्टर प्रदीप्त पात्र आउ डॉक्टर जयंत पंडा आमर फर्स्ट पैनल डिस्कशन रे तांकर इनसाइटफुल कमेंट्स देले अबाउट एपिडेमिक्स आर हियर टू स्टे द वे अहेड महामारी सा लड़ई तारी उपरे में आलोचना करथिले स्पेशली कोविड-19 फोर्थ वेव कथा जिते आसूची आम समस्त मन में भय आशंका भरी जाऊँगी से भाया गोटे समय ये गोटे गुरुत्वपूर्ण टॉपिक उपरे आलोचना करथिले आमर द्वितीय टॉपिकटा थिला कैंसर इज बीटेबल द डोस्टल लिमा ऑफ होप जो थे डॉक्टर कृपा सिंधु पंडा आम रिनाउंड ऑन्कोलॉजिस्ट ओडिशार प्रोफेसर माधवानंद कर आउ डॉक्टर सौम्य सूरत पंडा तांकर एक्सपीरियंसेस तांकर नॉलेज शेयर करथिले आमर ए जो प्रचेष्टा
आमर सुश्रुता द हेल्थ कॉन्क्लेव एटा आमर ओडिशा बाइट्स ओडिशा संवाद तरफ एटा आमर फर्स्ट ऑन ग्राउंड इवेंट आगु आम ऑनलाइन रे इवेंट करिछु किंतु जेतेबेले आमे परिकल्पना कलु गोटे आमे इवेंट करवा आमे भाबिलु एटा उचित हबो कि आमे स्वास्थ्य जेहेतु स्वास्थ्य ही संपद आ स्वास्थ्य नहीं कि आमे समस्ते बहुत चिंतित रोचु स्पेशली 2 वर्ष है गोटे महामारी सहित आम जुझुचु ये परिस्थिति आमको निहाती स्वास्थ्य को ही फर्स्ट गुरुत्व देकी आम स्वास्थ्य को कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज करूँ बहुत कम दिन नोटिस आम ऑर्गेनाइज करूँ आम डॉक्टर मानू सेलिब्रेट करने को डॉक्टर्स डे जेतु रोची इवेंटा प्लान करूँ किंतु डॉक्टर्स डे आप जानते डॉक्टर विधान चंद्र रायकर मेमोरी को सेलिब्रेट करने को तांकर अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने को डॉक्टर विधान चंद्र राय खाली गोटे बहुत बड़ डॉक्टर नथिले बहुत कंट्रीब्यूशन इंडियन मेडिकल साइंस को अच्छी आउ सी परवर्ती परिस्थिति रे वेस्ट बेंगल मुख्यमंत्री भी थिले तो सही दिन को आम करूँ बोली प्लान करूँ ओरिजिनाली किंतु जेहेतु जुलाई 1 कोइंसाइड करुच्ची श्री जगन्नाथ रथ यात्रा सहित आम भाविलु ता पूर्व दिन करवा तो आम से परिकल्पना को आज गोटे सकारात्मक रूप दे पारिचु से आम निहाती भाव में खुशी आम 2017 मसीह जितेबाला डिजिटल मीडिया रे आम पाद देलु गोटे स्टार्टअप हिसाब रे आम ओडिशा बाइट्स कलु से आम भाविलु कि हाँ वे तो डिजिटलटा ही आगु को सबुठ गुरुत्वपूर्ण मीडिया हम कारण प्रिंट मीडियार आग भाया चाहिदा रोना आस्ते आस्ते कमी जाऊँगी लोक मैंने समस्ते व्यस्त बहुल जिंदगी भितर जीवन यापन करुँच समस्ते मोबाइल देखुंट ब्रॉडकास्ट जो मैंने टेलीविजन इंडस्ट्री काम कर तार बहुत सुदूर प्रसारी प्रभाव रोचे किंतु लोकों पाखे हुए तो सब समय होनी टीवी आगे बसी देखा से आम आरंभ कर ओडिशा बाइट्स आरंभ करूँ आमर यहाँ 5 वर्षर जर्नी 2018 आम ओडिशा संवाद आरंभ करूँ आमर ऑर्गेनाइजेशन ना फ्रंटियर मीडिया 3टा डिजिटल प्लेटफॉर्म ओडिशा बाइट्स ओडिशा संवाद सहित एजुकेशन बाइट्स बोली आम गोटे एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन डोमेन रे भी काम करूँ तो आम भावुँ जो चिंता नहीं कि आम आरंभ करूँ से चिंताटा हुए तो फलप्रद होती कारण आज ओडिशा रे जेते इंडिपेंडेंट डिजिटल गणमाध्यम अच्छी ता भितर ओडिशा बाइट्स नंबर 1 सो आमको सेटा कहबारे बहुत गर्व अनुभव होची जे आमे जो निष्पत्ति नहीं आम सेटा को सकारात्मक भाव में गोटे पॉजिटिव माइंड नहीं कि आम कम करूँ क्रेडिबल न्यूज़ दौचु आ जेहेतु आम न्यूज़ आ कंटेंट उपर डेलीवर कलापर आम भावुँ वे तो नेक्स्ट लेवल जीवाई सबू प्रकार स्टेक होल्डर्स सहित आम एनगेज कर आवश्यकता अच्छी से इवेंटर परिकल्पना आगु को भी आम आहरी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करूँ सुश्रुत द हेल्थ कॉन्क्लेव को आम गोटे एनुअल इवेंट करने आम योजना करुचु सबु वर्ष आम सुश्रुत द हेल्थ कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज करूँ अलग सेक्टर्स रे भी आम कि आगु को इवेंट्स करूँ मु धन्यवाद देवी आम समस्ते जो मैंने उपस्थित रहे समस्ते स्पॉन्सर्स आमको गोटे सक्सेसफुल इवेंट ऑर्गेनाइज करने को साहाय्य करते थैंक यू सो मच जय जगन्नाथ Thank you very much, sir, for those concluding remarks. এবং বর্তমান আমি আমার মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এবং আমার গেস্ট অফ অনর को ओडिशा बाइट्स এবং ओडिशा संवाद तरफ सम्मानित करवा मैं अनुरोध करी संदीप सर को और पुण्या मैडम टू काइंडली कम फॉरवर्ड एंड फेलिसिटेट आवर ऑनरेबल मिनिस्टर श्री प्रीति रंजन गढ़ई फॉर हिज वैल्यूएबल प्रेजेंस एंड फॉर हिज इनसाइट्स ऑन सुश्रुता द हेल्थ कॉन्क्लेव. Thank you so much. I would request Punya Madam now to kindly felicitate Ms. Nilanjana Mukherjee Madam, Vice President and Unit Head of Amri Hospitals, Bhubaneswar. She's been a wonderful host. She did the event at a very short notice, but we're really thrilled. बहुत बढ़िया भाव में से संयोजना कले आज रही कार्यक्रम को. Thank you so much, Mansi. Thank you very much, sir and madam, for that honor. And now to propose the vote of thanks, may I request Ms. Punya Pravaratho, madam, please.
I think I need to wind it up first because everybody is really waiting. So it's curtained for this eventful day today. And I really want to thank our distinguished guests, panelists, and moderators. And I also want to thank Mr. Minister and Ms. Mukherjee, especially being with us since the beginning of the event and patiently sitting through all the sessions. And thank you, sir, for giving us all the insights, talking about your experiences, challenges, and hopes in the field of health. And last not the least, I would like to thank our sponsors, Ultimate Medicare, a Sweeney group of hotels, Amri Hospitals, Zikitas Health Care Limited, and Entertain, our event partner, for helping us and supporting this vision of Sandeep Mishra and Frontier Media and everyone associated with it. Thank you. So ladies and gentlemen and esteemed dignitaries, that concludes our first edition of SUSHRUTA, the Health Conclave. Thank you all once again for joining, and a huge thank you to Odisha Bytes and Odisha Sambad for roping me in to host such a wonderful platform. My name is